So, Aji, I think we will talk about specifically on answer writing. In the sense, पूर्वर जो classes गुड़ा मोर थिला, पूर्व class रे मु आपण मन सहित डिस्कस करथली जे आंसर टा केमिति लिखिबा. I think किछि सैंपल भी मु आपन को देखैथली जे कोन हम पॉइंट्स इंक्लूड करिवा एवं कोन कले हमरो इंप्रूवमेंट आसीबो. ओके, किंतु एई थरा जो परीक्षा रे आपण मानकर टेस्ट रे जोडा पड़ी छि क्वेश्चंस, we will try to understand जे से आंसर गुड़ा मॉडल आंसर कौन होगा दरकार. गोटे डिटेल आई थिंक किसी स्टूडेंट्स माने मॉडल आंसर डिमांड करथिले. मॉडल आंसर ऑलरेडी रेडी अछि. आपन को सहित एथि पय शेयर करा हेनी बिकॉज़ मु भाबिली जे इट इज बेटर प्रथमे मु आपन मन सहित इंटरैक्ट करे क्लासेस ता निए तापर मु आपन सहित मॉडल आंसर ता शेयर करिवि सो दैट कहीं ना पढ़ार इम्पोर्टेंट जिनस होची कॉन्टेक्स्ट. जदि हमें जानि परिबनी जे मु को बैकग्राउंड को लिखुची कोन मोर चिंताधारा अछि मु मोर जो गोटे कहते क्लियर एक्सप्रेशन एंड एक्सपोजिशन आंसर राइटिंग रो एक गोटे टर्म अछि जहाँ में लिखिया पे चेष्टा करूचे एम आई एबल टू एक्सप्रेस एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सेटा सब गोटे हमको देखिया पड़िबो. सो दैट इज द वन ऑफ द रीजन आज हमें डिस्कस करूचे टेस्ट 1 ऊपर क्वेश्चंस गुड़ा अछि. बाय द वे जो माने भी टेस्ट देई छंती, टेल मी वन थिंग, what did you think of the test? मोर क्वेश्चन है जे टेस्ट प्रथम लेखिला बेलू को किमा लेखि सला परे आपन को कोन असुविधा फेस करे पड़ला जो माने भी टेस्ट दे. Yes, please feel free to share with me. गुड इवनिंग सर. सर लास्ट टाइम मु कथा कहितली आपन संगे सर फेब्रुआरी मेंस परे मु आ माने लेखा लेखि पूरा छाड़ देतिली. एबे पूरा प्री मोड रे माइंड पूरा हेतला. एक टेस्ट देला परे सर बहुत पॉइंट माइंड किछि आसिलानी सर आ माने पूरा रैंडम थॉट आसिला आ माने बहुत बेकार ही सर हला टेस्ट मोर हिथरो माने माने एक्सपेक्ट बिलो एक्सपेक्टेशन सर. ठीक अछि. बाकी समझते. यस फॉरवर्ड कोन तो मु तो 4टा क्वेश्चन ही लिखि पाइली आ 2टा क्वेश्चन ठीक माने बुझी पाइलिनी कि केमिति लिखिबे कोठु स्टार्ट करबे आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 ठीक अछि. एंड डिजिटल राइट्स ऊपर माने खाली व्हाट आर डिजिटल राइट्स अछि तो ता भितर कोन कोन पॉइंट्स हबो आ एबे जो माने करंट न्यूज़ रे जो जनवरी रे जो थिला यूरोपियन डिक्लेरेशन ताकू भी मेंशन करा दिबो कि. ओके, सेटा मु छाड़ी देछि. मु आज सबमिट करी छी. आज अपन सबमिट करछन्ते ऑनलाइन. अच्छा अपन तो ऑनलाइन रे करछो निश्चित. ठीक अछि. यस सर. ओके, आउ कोन बाकी टिके गाइडेंस मिलिले टिके निश्चित. यस, आ जो माने टेस्ट देइथिले कोन तो कोन आपण फेस करछन्ती असुविधा कोन फेस करछन्ती सेटा मत शेयर करंतु. सी ए क्लास ता देखंतु मोरो what is the purpose of this class? Try to understand. Purpose of the class is not to give you the answer, because answer interview model रे अछि. मु आपन को क्लास वाला पर पीडीएफ टा शेयर कर देबी. सेठु आपन पढि कि भी निजे पढि पाए मैं बुझी पारिबे दिन सटा. तो सेथिरे मोर काम कोन एथिरे मु चाहूची कि आंसर राइटिंग रे बहुत सारा कोन थाए कि टेक्निक थाए जोटा को हमको डेवलप करिया पड़े. अब जते बडे आपण निजे लेखिबे से टेक्निक जो असुविधा फेस करछने ता ऊपर ही मु किसी गोटे आपण को गाइड करिया पड़ी. तो दैट इज द रीजन जहां भी आपण को प्रॉब्लम फेस करूछंती प्लीज फील फ्री टू शेयर विथ मी सो दैट आई कैन गिव यू सर्टेन सजेशंस अकॉर्डिंगली. ओके, बेसिस अच्छे सिली मिस्टेक हो किंबा बड़ा प्रॉब्लम हो जहां भी आपण को मन भीतर द्वंद्व चली छी कंफ्यूजन चली छी आपण क्लियरली शेयर कर परिबे.
Sir, can I speak? हाँ हाँ प्लीज Sir, actually, question number 4 रे actually sir Hmm. ମୋ ସାଙ୍ଗରେ issue ଯେଟା ହଉଛି କି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ content ଥିଲା ଯେମିତି କି 10 markers ର question number 4 ରେ enough content ଥିଲା କି even critically examine ବି କରି ପାରିଥାନ୍ତି but ସେଠି ମତେ ଏତେ କମ word ରେ କଣଟା mention କରିବାର ଅଛି ମୁଁ only points ଲେଖିଲେ ବି 150 words ହେଇ ଯାଉଥିଲା ତ ମତେ ସେଠି doubt ଲାଗୁଥିଲା କି କଣଟା ଲେଖିକି ମୁଁ 150 words କରିପାରିବି ଯେମିତି କି କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେମିତି କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 4 ମୋ ପାଖରେ ଏନଫ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା ଇଭେନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ରେ ବି ମୋ ପାଖରେ 1 2 ରେ ଏତେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା କି ମତେ 150 ୱାର୍ଡ ରେ ଲେଖିବାକୁ ମତେ କଣ କରିଲେ 150 ୱାର୍ଡ ରେ ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ କଲେ 150 ୱାର୍ଡ ରେ ହେଇପାରେ ମତେ ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମାନେ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଏମିତି ହଉଛି କି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମତେ ଇଭେନ ଓନଲି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଲେ 150 ୱାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଅଧିକା only 150 words sir 250 word पे मु ठीक अछि 150 word रे मते प्रॉब्लम होछ ठीक अछि ओके आउ कार किछि एनीबॉडी जे दैछन टेस्ट चलो ठीक अछि सर मोटी कहयातला कोन तो सर गुड इवनिंग सर एक्चुअली से जो क्वेश्चन नंबर 5 टा जो पडितला सेटा किछि बुझी हलानी बाकी जिंस तो मु लिखि छि कंटेंट भी हला मो पाके सब जिंस बट 5 नंबर क्वेश्चन किछि बुझा पड़लन ता ऊपर कोन लिखिबो को पर्सपेक्टिव रे ताको लिखिबो सर ठीक अछि चलो तो मु जहा जानि पाले मु जदि आपनकर जो इशू गुडा को मु टिके समरी कर दोछि प्रथम इशू जे किछि क्वेश्चंस रो आपन डिमांड जानि पालेनी नंबर 1 द्वितीय इशू जे आपनको पाखरे नॉलेज कंटेंट बहुत अछि बट ताकू केमिति हमें गोटे फिल्टर्ड आउ क्रिस्प लिखिबा सेटा होछि द्वितीय इशू तृतीय इशू किछि क्वेश्चंस एमते भी अछि जोटा कि आपण स्टार्ट केमति करिवे किबा एंड केमति करिवे तारो आपण माने ठीक गोटे रास्ता पाई पाले एम आई करेक्ट ये होछि तीनटा इशू मेजर इशू जोटा मु जानि पाली आपण समस्त Am I clear? Just let me know in the chat box or raise your hand. चलो तो आमे कौन लिखिबा এবং प्रथमे जो टेस्ट अछि टेस्ट रो क्वेश्चंस गुडा टिके भलो बार पढिबा प्रथम जो क्वेश्चन अछि कोन अछि that discuss the function and the powers हां ता पूर्व खाली गोटे जिंस मु क्लैरिफाई करे के चाहूची एटा मु जेमति कहली एटा एक्चुअली क्वेश्चन रे जदी आपण मार्क देबे 7टा क्वेश्चन अछि सो इट इज एक्चुअली 100 मार्क बट इट 10 into 7 अछि माने आउ तीनटा खंडे क्वेश्चन एतरे ऐड हेइनी तो मु आ गोटे क्वेश्चन पेपर रे तीनटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मु ऐड कर देबी जो स्टूडेंट्स माने ऑलरेडी देई सारी छंती मोर से मन गोटे सिंपल एडवाइस रहइबो से तीनटा क्वेश्चंस को कॉम्प्लीमेंट करी कि आपण द सेपरेट आंसर शीट रे लिखि के आपण सबमिट कर परिबे ओके आ जो माने नुआ ताको पई इजी हे जिवो चलो ठीक अछि सो आमे टिके क्वेश्चंस गुडा को भलो भाव पढिबा साधारणतः जदि आपण ओपीएससी रो पूर्व वर्ष रो क्वेश्चंस देखि छिवे पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन रे ए 10 मार्क और 20 मार्क पैटर्न रे चली छी इनफैक्ट यूपीएससी रो भी पैटर्न रो एई भले आपण को 10 15 20 एई भले पैटर्न होची यूपीएससी रो पैटर्न नाउ वर्तमान आमे जेते बळे जहाँ हमर जो पढ़ार जो स्टाइल रहिबो आंसर राइटिंग रो मेन जो एक्सपेक्टेशंस अछि मु चेष्टा करछि ए जो क्वेश्चंस गुडा से यूपीएससी लेवल रो टिके हो आउ हमर जो चेंजिंग पैटर्न हिसाब रे तार एक्सपेक्टेशंस टा टिके फुलफिल करो या अर्थ कोन कि पूर्वरो जदि आपण देखिथिबे क्वेश्चंस गुडा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थाए आउ किछि किछि क्वेश्चंस बहुत डेफिनेशन बेस्ड थाए किंतु एथरो जो टेस्ट रे आपण देखि परथबे क्वेश्चंस गुडा टिके माने क्रिटिकल जणेकर जदि एनालिटिकल एबिलिटी टिके कम थिबो ताको कंटेंट लेखिबा पई कॉम्प्रिहेंड करिया पई टिके मुश्किल हे पारे किंतु हां जो पिला माने भलो भाबरे बुझी दिबे टॉपिक टाको भलो भाबरे जानि थिबे आ रेगुलर बेसिस रे करंट रिलेटेड इश्यूज गुडा को तार जो रिलेटेड कोर टॉपिक सहित से गुडा को जदि से माने अपडेट हेइथिबे तले आपण भाई मते काय लागुनी एतरे किछि डिफिकल्ट हबा दरकार नाउ नेक्स्ट सेंस होची हमें जतबळे जानिबा जे कोन क्वेश्चंस प्रथम क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन डिस्कस फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो साधारणतः ए दुटा क्वेश्चंस मु जानि के पचारछि एटा गोटे फर्स्ट क्वेश्चन होची 1 सेकंड होची 4 ए जो दुटा क्वेश्चन रे साधारणतः कोन हुए यू हैव इनफ कंटेंट मु एटा जानि के आपन को पचारछि
जे आपण पाखरे कंटेंट भरपूर मिलियो एथरे आउ एमती भी सिचुएशन आसीबो जे आपण जदी लिखिबा स्टार्ट करियो सब गुडा इन डिटेल मे बी सेटा 150 वर्ड कोन 500 वर्ड भी कम पड़े बुझी परछुंती तो एई दीटा क्वेश्चन हमें जानिबा केमती कि लिखिबा कोन आ टू दी पॉइंट रे मॉडल आंसर मु देखिए देबी मॉडल आंसर किछि किछि पॉइंट्स जोटा लिखा है ताकू भी आपण मु माने मल्टीपल करिके रखिछि सो दैट आपण सेठू कोन करि परिबे गोटे ताकू भी काटिके आपण निज हिसाब रे निजर कोनोसी पॉइंट गुडा को आपण देई परिबे सो एक आउ 4 नंबर रो क्वेश्चंस रो ऑब्जेक्टिव से आथला दैट आपण को कॉम्प्रिहेंड केमती करिवे 2 नंबर रो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन टा कहि परिबे एटा काहे की पसरा जाईछि व्हाट इज ई गवर्नेंस डिस्कस द फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट ऑफ हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस एटा होछि करंट अफेयर्स और पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन मु काडा बुझी परछन ऑल ऑफ यू आर यू अंडरस्टैंडिंग Yes, sir. यस और नो करंट अफेयर्स आउ पॉलिटी रिलेटेड आ साधारणतः क्वेश्चंस गुडा आपण ए टाइप रो पाइबे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ओके तो ई गवर्नेंस सहित हैदराबाद डिक्लेरेशन जोटा अबे रिसेंटली हेइची ता ऊपर कोन सेटा फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट हो ता ऊपर मु जानिया पड़ियो थर्ड जिंस कोन व्हाट इज डिजिटल राइट्स ये भी आपनकर मु कहिबी कि करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी क्वेश्चन डोंट वरी मु आपन को पॉइंट्स दे देबी आपन ताकू स्टिक करि परिबे नाउ मु कहली जे हमें कोन दिस इज स्टैटिक ये भी गोटे स्टैटिक पोर्शन एटा टिके ए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होची डायनामिक पोर्शन ओके देन हमें आसीबा वर्तमान 250 मार्क्स रो क्वेश्चन ऊपर माने 250 वर्ड्स रो क्वेश्चन 20 मार्क्स रो does the right to clean the environment entire legal regulations on burning crackers during Diwali discuss in the light of article 21 of the Indian constitution and judgments of the Supreme Court of India in this regard एबे ए क्वेश्चन दा काहे की पछारे जाय कहि परिबे एनीबॉडी हु कैन आंसर दिस काहे की पछारे जाय कि रिसेंटली दिवाली रे आपण जानि छथि कि दिल्ली रे दिवाली ऊपर बैन लगा जाय तो रिसेंटली हमर कोन करा है दिवाली रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे गोटे पिटिशन दाखल करा जायतिला जोथरे कि सुप्रीम कोर्ट करो जो पुराना ऑर्डर थिला कि जो दिवाली पालन न करिया पई जो ऑर्डर थिला ताकू रिवोक करिया पई गोटे पिटिशन दाखल करा जायतिला तो से जो पिटिशन दाखल करा जायतिला से पिटिशन दाखल रे साधारणतः मु कहिबी दैट ता एटा होची करंट अफेयर्स रिलेटेड प्लस पॉलिटी बुझी पाले नाउ आ गोटे कोन हाउ डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इंप्लीमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑन द एग्जीक्यूटिव बाय हिज और हर डिस्क्रिप्शन पावर ये भी गोटे स्टैटिक पोर्शन किंतु क्वेश्चन रो पचारिबार शैली जोटा टिके अलगा अछि माने ये कोन पचाउची कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केमिति एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करिके रखि परिबे ओके काहे कि एठी देखुन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दीटा क्वेश्चन अछि 1 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन ता मुख्य रीजन होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर ए वर्ष इलेक्शन हेची आ ओडिसा रो आई मीन द्रौपदी मुर्मू जी हमर महामहिम हेइचंती सी हमर ओडिसा रो तो सेति पय बहुत एक्सपेक्टेशंस अछि जे आपनकर ए थ्रू क्वेश्चंस आसीबार संभावना अछि नेक्स्ट होची क्रिटिकली एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस ऑफ स्टेट पॉलिसीज डिस्कस रेलेवेंट केसेस व्हिच सो कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम एटा गोटे टिपिकल क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शंस बट डायनामिक पोर्शन यार कोटा ए होचे सेकंड पॉइंट ता होचे यार डायनामिक पोर्शन ओके वर्तमान या सहित मु गोटे जिंस खाली गोटे जिंस मोर मन पड़ी जाउची प्लीज आपण नोट डाउन कर देबे आजी गोटे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंगर जो गोटे जजमेंट आसी सुनि छथि कोन जजमेंट ईडब्ल्यूएस कोटा ऊपर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सुनि छथि जिंसटा ऑल ऑफ यू Yes, sir. आज जस्ट मोर मन पड़ी गला सेथि में मु रिपीट कर दोची ऑल्दो एटा टेस्ट रे नाही किंतु एटा प्रोबेबल क्वेश्चन हिसाब रे पाई परिबे हमरो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आजी गोटे जजमेंट पास करछन जे आ से जो जजमेंट होची आई मीन जस्टिस हमरो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सेथरे इंक्लूड थिले 5 जजेस बेंच रे हमरो 3:2 रेशियो रे माने 3 जण हां करछन 2 जण मना करछन आ जे मना करछन ता भितरे भी चीफ जस्टिस अछन जे अगेंस्ट रे थिले तो 3:2 जजेस रे मोर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पाई जो एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट 10% रो जो कोटा करिथिले सेही कोटाटा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को द्वारा पुनी वैलिड करा जायछि तो बहुत हाईली चांस अछि दैट एई ऊपर क्वेश्चंस आसीबार संभावना अछि आर यू क्लियर नोट करले जिंसटा
EWS कोटा ऊपर पढ़ते हुए समझते ठीक अच्छे yes or no all of you are active Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक sir. अच्छे तो एटा खाली नोट करंतु ना वर्तमान ए जो क्वेश्चंस कोटा आसिला now we will try to understand how to write these answers okay now एटा गोटे म आपण मन पई गोटे प्रिपेयर करछि मॉडल आंसर जोटा टेस्ट 1 रो let us try to understand कि केमिति हम मॉडल आंसर ता लिखिबा how to write this model answer first question कोन कि discuss the function and the powers of the president of India again मोर एठी मुख्य जो ऑब्जेक्टिव अछि आपण मन सहित शेयर करिया पई that कोन कंटेंट आपण लिखि परिबे so that आपण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर रे जदी एई भले क्वेश्चंस आसे पावर्स एंड फंक्शन रो what you can do is refer this particular answer और से आंसर रो आपण स्पेसिफिक स्टेटमेंट को उठे कि आपण से लिखि परिबे फर्स्ट थिंग इज मु एथरा मु एई जो मॉडल आंसर रे मु एटा भी कहि देबी जे मॉडल आंसर रो कोन कोन आपण स्किप भी करि परिबे एमति नो जे जहां भी लिखा है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करिवे न दरकार नै मॉडल आंसर बहुत बहुत गोटे एक्सक्लूसिव हिसाब मु लिखिची आ किछि पॉइंट्स मु एक्स्ट्रा भी देइची तो आपण को मे बी एटा भी लागि पारे जे वर्ड लिमिट क्रॉस करथिबो बट मोर मुख्य उद्देश्य होउची कि कोन पॉइंट्स हम कवर करिवा आ जो ए जो एक नंबर क्वेश्चन रो मु एग्जॉस्टिवली पाखा बाकी आपण को 2 पेज क्रॉस करची तार मेन ऑब्जेक्टिव जे जेतबळे आपण एक्सेस करंती कंटेंट ताकू हमें कोन कोन केमटी फिल्टर करी कि को पॉइंट्स गुडा को हमें स्टिक करि परिबो सो फर्स्ट हमें कोन जानि से हाउ टू राइट एन आंसर हमर स्टैंडर्ड गोटे फॉर्मेट कोन फर्स्ट रहिबो इंट्रो रे आपण कोन रखिबे कि क्वेश्चन रो कोन डिमांड व्हाट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विषय प्रथम आपण लिखिबे द्वितीय जिंस बॉडी रे कोन लिखिबे कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कोन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन माने फंक्शंस एंड पावर्स विषय डिटेल्स लिखिबे थर्ड होची कंक्लूजन रे लिखिबे कोन कि फंक्शन ऑफ पावर्स ता यार इंप्लिकेशंस कोन हे पारे कि फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट कोन हे पारे कि वे फॉरवर्ड कोन हे पारे दैट शुड बी द कंक्लूजन पार्ट तो वर्तमान आपण जानि छथि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत गोटे इजी चैप्टर एटा एते भी डिफिकल्ट नुह किंतु हमर लेखार स्टाइल ता केमति हो दरकार सो फर्स्ट पॉइंट हाउ टू इंट्रोड्यूस एन आंसर हमें आंसर ता को केमति स्टार्ट करिवा आपण केमति स्टार्ट करिवे डायरेक्ट जदि आपण लिखिबे कि फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 1 2 3 4 एमति न करि कि मु आपण को सिंपल सजेशन करबी कि एटलीस्ट 2-3 सेंटेंसेस आपण प्लीज आपण लिखिबे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विषय कोन लिखिबे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट the system of the government of India is a cabinet form of government the Indian president is therefore a constitutional head like the king or the queen of Britain that is all executive powers are constitutionally vested in him although those are actually exercised and executed by the cabinet you just try to observe my language mu jo iti language use karichi see writing ame jeto lekhu साधारण जदि जनरल इंग्लिश कथा हम कहिबा गोटे थाए पैसिव वॉइस गोटे थाए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ता मु कहिबे जे अवॉइड करिया पे चेष्टा करू जदि आपन को ऑलरेडी हैबिट हेई सारिची इट्स ओके बट चेष्टा करिवे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखिया पे लाइक फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एक्टिव वॉइस द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्टिव वॉइस द इंडियन प्रेसिडेंट इज देयरफॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक्टिव वॉइस तो जेतेबेले आपण एक्टिव वॉइस यूज करंती आंसर रे सेतेबेले कोन होय कि आपनकर जो एक्सप्रेशन मु कोन दीटा वर्ड कहली एक्सप्रेशन और एक्सपोजिशन ए जो जिंसटा आपण जहा एग्जैक्टली फील करिया पे चाहू चंदी कि से जो इवैल्यूएटर जे अछंदी से जानू जिंसटा को डेफिनेटली सी भी तार भी माइंड रे क्लियर कट आईडिया आसी जे ओके ए जिंस गुडा आपण देखि चंदी ओके तो ये गोटे प्रकार रा आपण इंट्रोडक्शन देई परिबे दिस इज टाइप 1 देखो मु वेराइटी मोर क्वेश्चन रो मु वेराइटीज ऑफ रखिची ये होची सेकंड टाइप माने टाइप 2 जागो जोटा भल लागुची आपण से बेला लिखंतु मु डिफरेंट तरीका खाली कहूची जे इंट्रोडक्शन ता करबा केमिति टाइप 2 रे हम कोन लिखिबा डायरेक्ट आपण इमिडिएट स्टार्ट करि परिबे कि इन इंडिया द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज़ these powers are used in his name in pursuance of the constitutional stipulations under article 53 which reads the executive powers of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution simple
तो मु कौन कहली ये होची इंट्रोडक्शन टाइप 1 ये होची इंट्रोडक्शन टाइप 2 जहा को जोटा पसंद आपण से भले लिख परिबे क्लियर समझते एम आई क्लियर इंट्रोडक्शन केमती हबो जस्ट लेट मी नो क्विकली मो से इंटरैक्ट करंतु बिकॉज़ दिस इज एन इंपोर्टेंट सेशन Yes, sir. Yes, sir. समझते जानि गले कि सी यू नो नीड टू राइट डाउन बोथ द थिंग्स जदि आपण दुईटी जाको एकाथरे लिखिबे जदि 20 मार्क 250 वर्ड लिखि परिबे आपण ऐड कर दी परिबे जदि 10 मार्क र क्वेश्चन अछि यू नो नीड टू मेंशन दुईटी जाको ऐड करिया दरकार नै आइदर आपण एटा लिखंतु किबा एटा लिखंतु किबा एठु किछि पॉइंट नै जानतु एठु किछि पॉइंट नै तो एठु करी कि मु कोन चाहू छी कि 2 to 3 सेंटेंसेस मैक्सिमम ताटो अधिक लिखिबा दरकार एति कि जदि करिवे ये इंट्रोडक्शन टाइप 1 इंट्रोडक्शन टाइप 2 सिंपल जिंस वंस अपन इंट्रोडक्शन लिखिला परे এই जो स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेटमेंट कोन आकु कोंदी ट्रांजिशन स्टेटमेंट रो अर्थ कोन ट्रांजिशन स्टेटमेंट रो अर्थ अपन देखितु जेतोले अपन ट्रेन बगी रे जानती सपोज अपन गोटे एसी रो बगी अछि नेक्स्ट एसी रो बगी पय जिबा पय केमदी अछि कोन दरवाजा लागि छी ना जंप करी के जिबे सेठी गोटे छोटो गोटे पैसेज टाइप रो थाए तो सेमती आंसर राइटिंग रे भी सबुठु बड़ जिंस होची ट्रांजिशन रे कोन हुए कि जो इंट्रोडक्शन रो बॉडी पार्ट को जेतबेले आपण आसीबे से जो जंप ताको स्मूथ कराई दिए जदि आपण मानियंतु आकु लेखिबेनी सपोज खाली फर्स्ट आपण इंट्रोडक्शन लिखि देले तो डायरेक्टली आपण स्टार्ट करले एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कोन तो एटा भलो लागिबोनी काहा को भी भलो लागिबोनी जे भी आपण आंसर कॉपी देखिबो से कहै इमती गोटे कोन लिखछि से ना तार स्टार्टिंग तो हे गेला बट व्हाट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो ट्रांजिशन स्टेटमेंट सब बेले मैक्सिमम दुईटा हवा दरकार मिनिमम गोटे हवा दरकार ट्रांजिशन स्टेटमेंट गुडा आ जदि आपण ट्रांजिशन स्टेटमेंट टाकू जदि गोटे पैराग्राफ लिखिबे तार कोनसे मतलब हबोनी जेमति कि फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन स्टेटमेंट रे मु कोन कहली इंट्रोडक्शन हम कोन लिखिबा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विषय देछि हम ता विषय लिखिले बॉडी पार्ट रे कोन लिखिबा फंक्शन ऑफ पावर तो फंक्शन ऑफ पावर्स रे लिखिबा पूर्व मु एठी गोटे ट्रांजिशन स्टेटमेंट कोन देछि कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया may be classified into 6 principal types this is called as transition तेठु कोन हला कि आपण स्मूथली इंट्रोडक्शन रो बॉडी पार्ट को केमिति गोटे ट्रांजिट करिवा केमिति हम स्मूथली लैंड करिवा सेटा आपण को जानिया पड़िबो सो जस्ट राइट अ वन स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट मैक्सिमम फॉर दैट तापरे एठी कोन एठी हमर जो 6टा प्रकार रो प्रिंसिपल अछि किबा जदि आपण 6टा लिखिया पे चाहू नंदे सिंपली आपण लिखि परिबे कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी क्लासिफाइड एज मेंशन्ड बिलो सिंपल जो भले आपको ठीक लागुची आपण से भले लिखि परिबे बर्तमान कोन कोन फंक्शंस अछि आपण जानचोंती कि आपण पावर्स एंड फंक्शंस कले बहुत सारा अछि मु एठी बहुत बडे एग्जॉस्टिव लिस्ट देछि आपण ता भितरु पिक करि परिबे पिक करि कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट गुडा को आपण लिखि परिबे बुझै देबी केमती गोटे होची एग्जीक्यूटिव फंक्शन आ गोटे होची द्वितीय होची लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ओके तृतीय कोन पावर्स एंड प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ये गोटे प्रकार रो पावर तांगर फंक्शन ता आ गोटे देखो फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस आ गोटे होची डिप्लोमेटिक पावर्स आ गोटे होची मिलिटरी पावर्स आ गोटे होची पार्डनिंग पावर्स और जुडिशियल पावर्स दैट्स इट बुझी पाले एति ही आपन को लिखिया पड़ियो ना वर्तमान आपन समस्त लक्ष्मीकांत बहिरे पढिसंती आई एम श्योर फॉर दैट तो लक्ष्मीकांत जा बहिरे जहा भी अछि आपन सेही पॉइंट्स गुडा को आपन मेंशन करि परिबे किबा एठु भी आपन किसी पॉइंट नै परिबे केमति लिखा है एबे एग्जीक्यूटिव फंक्शन रे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेटली दबा पड़ियो कोन रहिबो हेड ऑफ द यूनियन देखंतु नाउ दिस इज द आर्ट ऑफ सीक्वेंसिंग आंसर जो प्रेजेंटेशन जेतोला हम कहू कि सर मोर आंसर ता भलो केमिति आपन का आंसर सेतोला भलो हबो जेतोला आपन सीक्वेंस रे रखुछंती फॉर एग्जांपल जदि आपन एग्जीक्यूटिव फंक्शन विषय लिखुछंती एंड स्टार्टिंग पॉइंट आपन लिखुछंती कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर एटा को आपन पॉइंट नंबर 1 रे जति दोउछंती इट विल नॉट लुक गुड बिकॉज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रथम पॉइंट एआई हबो बिकॉज़ ही इज द हेड ऑफ द स्टेट आ ताकू जदि छाडी के आपण अलगा पॉइंट के से मेंशन करूछंती मु कहूनी जे आपण मार्क पाइबेनी कि आपण का आंसर भूल आपण का आंसर ठीक किंतु देयर इज एन इंप्रेशन मार्किंग जो जिंसटा कोटे थाय नि कि इमती कोन आपण एक्स्ट्रा लेक्शन से द बेस्ट तो खाली कंटेंट रहिले बेस्ट होबोनी कंटेंट को आपण केमिति सजाडी के लिखिचंती कहा परे को जिंसटा लिखिचंती सेटा भी बहुत मायने रखे सो फर्स्ट जिंस हम कोन लिखिले कि हेड ऑफ द यूनियन तो एठी दी तीनटा पॉइंट लिखा है आपण एटा को गोटे समरी बनै परिबे सिंपल आपण एति खाली लिखि पारि द president is at the head of the union executive consequently all the executive powers are exercised in his name okay जदि आपण चाहउछन आउडी एक्सटेंड करिया पे नले एति जदि आपण लिखिबे सफिशिएंट the executive power of the union
to be exercised by the president is in extent to the matters with respect to which the parliament has the power to make laws and conclude treaty and agreement. Either आपण a statement को लिखंतु or else you write down this statement. Again ମୁଁ आपन कोन कहूची कि I am giving you two options. ମୁଁ एथिरे जो दीदीटा स्टेटमेंट कोन देइची all the either आपण प्रथमटा लिखंतु किमा द्वितीयटा लिखंतु जोटा भी लिखले चलिबो किमा आपण जदी दीदिया को लिखिबे ट्राई करंतु ताकू केमते आउट के फिल्टर करि हबो. नेक्स्ट आपण कोन अपॉइंटमेंट्स माने कोन प्रेसिडेंट पाखर पावर अछि का को अपॉइंट करिया पे एटा त आपण पूरा लिखिया पड़ियो कि एज ऑफ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का को अपॉइंट करंती गवर्नर ऑफ द स्टेट को करिवे जजेस मान को करिवे ऑडिटर जनरल को करिवे देन मेनी हाई ऑफिशियल को करिवे सच एज फाइनेंशियल कमीशन इलेक्शन कमीशन यूपीएससी मेंबर्स को सी अपॉइंट करिवे एटसेट्रा सिंपल. आउ कोन अपॉइंटमेंट हबो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स इट इज सिंपल लिख परिवे द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर and with the aid and advice of the prime minister he appoints the council of ministers. Simple. Okay, आउ कोन ताकर फंक्शन एंड पावर देखिबा कैन आस्क टू प्रूव मेजॉरिटी इन लोकसभा. सपोज फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट रो जदी कोनोसी सिचुएशन एमते आसिला ताले कोन करि परिबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको पचारि परिबो कि तमे लोकसभा रे निजर मेजॉरिटी को प्रूव करो. बुझि पाले? यस और नो? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? जस्ट लेट मी नो क्विकली. Yes, sir. Yes, sir. Sunita, Yes, sir. Sudhanshu, Subhasri, and Falguni, clear? समस्ते? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now, एठी गोटे जिंस हम आपको इंपोर्टेंट हाइलाइट करबे चाहूँ. लिसन केयरफुली. समस्ते लक्ष्मीकांत बही पढुछन्ते. आपण भी पढुछन्ते. सेम क्वेश्चन, सेम आंसर. आपण एमते कोन एक्स्ट्रा लिखिछन आपन मिलिबो. केबे पचारछन नै जबो. सर मु एमती एक्स्ट्रा मु कोन लिखिछि कि मते एक्स्ट्रा मार्क मिलिबो. ना मैक्सिमम पिला आपण माने आज जो ऑब्जेक्टिव मु जो गुटे कहिली कि आपण आज एठी आसीबार मुख्य कारण कोन से जो सेही जिंस गुडा को बुझिबा सेही जिंस गुडा को जानिबा ना कि आंसर कहिबा आंसर त आपण कोठु भी पाइछि तो मु एमते कोन लिखिबी मु एमते जो इवैल्यूएटर को अलगा सी दिस एग्जामिनेशन इज एन कंपटीशन दैट इज अ रीजन इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम माने आपण अन्य जन सहित कंपीट करछो तो आपण को एमते किछि जिंस बेटर करिया पड़िबो सो दैट आपण को एक्स्ट्रा गोटे 2 मार्क पाइबे. बिलीव मी मु पिला देखिछि पिला माने 2 मार्क 3 मार्क पाई गोटे स्टूडेंट मु ना कहै पे चाहुनी से स्टूडेंट रो 11 मार्क पाई ए वर्ष ओपीएससी रे इंटरव्यू भी फेस करछि 11 मार्क पाई से पिला रे हे गला बुझि पाले तो काश जदी गोटे गोटे पेपर जदी कार 2 मार्क 3 मार्क भी पळे आस्थांदा सी गोटे लिस्ट रे पळे आस्थांदा तो आपण एमते कोन जिंसटा लिखि चंदी एक्स्ट्रा जोति पे आपण एक्स्ट्रा 2-3 मार्क पाइबे. एठी गोटे बढ़िया पॉइंट अछि. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा. लुक एट दिस. एटा होची कांसेप्ट. एठु एति होची कांसेप्ट. बट मु एठी कोन करछि आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल. मु कोन कहिछि कि इन केस ऑफ एनी डाउट ही कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द लोक सभा. ओके दिस इज कॉल्ड एज दिस एक्स फैक्टर जोटा कहंती एक्स फैक्टर इन द आंसर. एडी आगोडे जिंस मु कोन लिखिछि कि एज द प्राइम मिनिस्टर SD Devgowda was asked by the president after the officials withdrawn the support by the Congress party from ministry. This is called as ornamental answers. माने मु कोन कहूछि कि समस्त सेम जिंस समस्त से सेम सोर्स रु पढुचंती आपण भी लक्ष्मीकांत पढले से माने भी लक्ष्मीकांत करले बट आपण इनते कोन एक्स्ट्रा गोटे पॉइंट लिखछन कि ना दुटा पॉइंट लिखछि जोटा कि आपनकर आंसर शीट रो इंप्रेशन ही चेंज कर दबो. दिस इज वन लाइन एंड मु एति की गारंटी दे कहूछि कि एई स्टेटमेंट मैक्सिमम पिला लिखिबेनी केबे काना ताको माइंड को जिंसटा आसीबो. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes. yes, ओके Yes, sir. बुझि पाले. सो ट्राई टू इनकलकेट सर्टेन एग्जांपल्स. ट्राई टू इनकलकेट एंड एठी आ गोटे भलो जिंस कोन कि आपण इंडियन पॉलिटी जदी आर्टिकल ना गुडा आपण मेंशन करंती इंडियन पॉलिटी जदी आपण आर्टिकल ना गुडा मेंशन करंती ताले आपणकर आंसर ता आउट के एनहांस हो जाए. ओके तो दिस इज एन एक्स फैक्टर हम एठी जानले एटा आपण ऐड करि परिबे. आ कोन ऐड करि परिबा सुप्रीम कमांडर एज ए हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. सिंपल. ये हला आपणकर एग्जीक्यूटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर कोन करिबा कि द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. केमिति
केमिति देखंतु the union legislature of the parliament consists of president, two houses. The president is therefore the integral part of the union legislature. कौन दे दे, he shall summon from time to time either separately or jointly the house of the parliament. The president can prorogue the house or dissolve the house also. Yes, clear? बुझी पाले legislative power कौन? President is the part of the parliament. एठी दी तीनटा पॉइंट लिखे. Again आपण एमती कोन एक्स्ट्रा लिखि जंदी जोथरे कि आपन को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलिबो. This is the extra point. Here is that. Look at this. For example, the president solved the 20th Lok Sabha in early 1999 when the confidence motion in favor of the Vajpayee government was lost in Lok Sabha. This is called as command over the polity. मो कहटा बुझी परछुंती गोटे जनरलिस्टिक आंसर आ गोटे स्पेशलिस्टिक आंसर भितर तफात होची एतिकी. जनरलिस्टिक कोन आपण जोटा प्रथम जोटा जस्ट एतिकी छाड़ देले व्हाट इज दैट एठु एतिकी समस्त जानचंती. बट ए जो गोटे जिंस खाली एक्स्ट्रा आपण लिखुचंती दिस वन लाइन will make your answer way better than the others. This one line. This is called as ornamental. Same जिंसो आ कोन हमें इनती एक्स्ट्रा जिंसो लिखिबा जोतरे की आउरी चेंजेस आसीबो. तो जदि आपण गोटे गोटे आंसर ए भले दि तीनटा पॉइंट आपण लिखि देले बिलीव मी यू विल बी गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स. आउ भाबंतु जो माने आपनकर इंडियन पॉलिटिक्स खाता चेक करिवे से माने नॉर्मल दे आर नॉट जनरलिस्टिक जे कि सब किछि पढाई दोथियो. नो, they are specialist. से माने प्रोफेसर रीडर थिबे एंड पॉलिटिकल साइंस से माने रीडर थांती प्रोफेसर थांती से माने आपन को इवैल्यूएट करिवे. अब भाबो से माने 30 वर्ष 40 वर्ष धरि जो माने को एते अभिज्ञता भितरे तांको पार्टी रे अनर्गल प्रिंट हेछि जे को वर्ष को गवर्नमेंट आस्तिला कोन हितला कोन नै आ से माने जतो सब आंसर गुडा देखुचंती आ जदि अचानक से आपन को पॉइंट जदि पळा आसला एबन आपन आ गोटे काम करि पारे एमडी ए जो नुवा नुवा पॉइंट को अंडरलाइन कर दे पारिबे. देन ऑटोमेटिक से ओके ठीक अछि प्लेयर अछि दिस. ओके आउ कोन लिखि परिबा कि समन्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट. एटा भी आपण जानछथि कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम से सेशंस को समन करि परिबा. आउ कोन अछि नॉमिनेशन. नॉमिनेशन में कोन लिखि परिबा कि द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स द मेंबर्स टू द बोथ द हाउसेस. माने राज्यसभा को से नॉमिनेट करि परिबे एवं लोकसभा को भी नॉमिनेट करि परिबे. पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्स. बिल को नै कि आपण समस्त जानछथि कोन कोन पावर से तांको पाखरे अछि. वीटो पावर से कोन एक्सरसाइज करिबे रे आपण जानछथि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स व्हिच रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. कैन यू टेल मी व्हाट आर द बिल्स जोथि कि प्रेसिडेंट को पूर्व परमिशन दरकार. सर मनी बिल सर ठीक तापरे अछि. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सर. ओके आउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. सर जदी गोटे स्टेट रो सर बाउंड्री फाउंड्री अल्टर करिया थो सर से राइट. केस रे सर. ओके गोटे हला मनी बिल. मनी बिल Sir, आर्टिकल कोन? article 301 sir, interstate trade and commerce. Correct. Article 301, Article 110, Article 117 clause number 1, Article जदि 2 आउ 3 भीतर जदि किसी चेंजेस आसे, all of these requires a prior permission of the President of India. Now when you write in these articles, then automatically जे आपण को खाता देखिबो से कहबो जे ओके अछि जिनसडा इमते नो जे हवा हवा पढी छी, it has a certain content. Sir, Okay. one doubt. हाँ yes. Sir, actually, sir ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି କି word limit cross ଯେମିତି ନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯେମିତି କି ଲେଖିଛି constitutional amendment at 100 ଯେମିତି କି ଆପଣ କହିଲେ ଲୋକସଭା nomination sir 104 ରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟା repealed ହେଇଯାଇଛି. ତ ମୁଁ ସେଟା मेंशन କରିଛି 104 CA just word limit cross କରିବାକୁ ନ କରିବାକୁ ମୁଁ AGI ଲେଖିଛି, CAG ଲେଖିଛି, ECI ଲେଖିଛି just to limit the word limit. ତ एटा किछि बैड इंप्रेशन देखो बैड इंप्रेशन मु कोन कहिबी जदि फॉर एग्जांपल सीए रो अर्थ बहुत सारा. अच्छा आपण जदि लिखि देथिबे कि द सीए इज सीए माने कोन? सीए माने करंट अफेयर्स ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके सर. तो आपण जदि दैट इज द रीजन जेतबेला आपण न्यूज़ पेपर पढिबे से कमेंट आपण जानि परिबे से माने कोन सपोज ईसी माने आपण जानछन इलेक्शन कमिश्नर. यस सर. बट इवैल्यूएटर जानिबो केमति सेटा होची इलेक्शन कमिश्नर. सर एट एक्चुअली हां बुझिगल. तो सब बेले कोन करिवे स्टार्टिंग रे कंप्लीट लिखि देबे इलेक्शन कमिश्नर ब्रैकेट रे ईसी. ता परे आपण शॉर्टकट गुडा यूज करंतु किसी प्रॉब्लम. ओके सर. ओके इवैल्यूएटर को प्रथमे जणे दियंतु कि एससी माने शेड्यूल कास्ट ना सुप्रीम कोर्ट. ओके सर. इवैल्यूएटर जानिबो केमति आपण जदि द एससी इज सेतु जणा पडिबो नै जिंसो एससी रो अर्थ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके सर. ओके थैंक यू सर. चलो
आउ कोन द बिल पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेचर देखो ऑल द मु बहुत जगह रे आर्टिकल मेंशन करिछि आर्टिकल 111 आर्टिकल 200 मेंशन करिछि जो बिल गुडा स्टेट लेजिस्लेचर पास कराए आ जदि गवर्नर ताकू चाहे जे नाही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो कंसेंट रखिबा पई देन आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताकू करि परिबे आ गुड कोन प्रोमुलगेट टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी जानछन समस्ते आर्टिकल 1 2 123 3 8 जिंस रे आपण समस्त लिखिबे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ अगेन मु आपको रिपीट करछि कि एक्स फैक्टर कोन आपण एक्स्ट्रा जिंस एमते गुड लिखछन आपण एक्स्ट्रा पॉइंट पाइबे दिस इज द पॉइंट such an ordinance shall cease to operate unless passed by the both the houses of the parliament within the stipulated time period. This is the example. A.K. Roy versus Union of India 1982 illustrates the proposition that the satisfaction of the president must be as to the existence of the situation which makes it necessary for the president to promulgate such an ordinance. This is puni me repeat korche. See, if you write in a general way, you will get average mark. But jodi apna ei jo extra jinso guda mu kahuchi, if you try to include and inculcate this and appreciate these points, case he gala, example he gala, articles he gala, believe me, your answer will be way better than the others. I can guarantee that. अब बहुत पिला मु जो मेंस रे मु एबे भी खाता जे देखि कि पूर्व थर जहां भी जानि छी सी सेमाने कोन भाबंती कि सर मो पाखरे समय कम अछि मु एते लिखि परिबेनी ताले आपन केम एक्सपेक्ट करिवे जे आपन को भलो मार्क पड़ियो ट्राई टू अंडरस्टैंड कोन कहि चाहू छी सो जेते बडे आपन आंसर लिखंती जने मनीष देखिले आई व्हेन आई इवैल्यूएट लॉट ऑफ आंसर्स आई गेट टू नो कि से पिलार केते नॉलेज अछि पॉलिटी रे केते अछि इकोनॉमिक्स रे केते नॉलेज अछि आपन पढिले जानि जेबे एंड अगेन आई एम रिपीटिंग डोंट फॉल इन द ट्रैप जो आजिकल गोटे चली कि नाई एग्जाम हॉल रे एते प्रेशर भितर मन पड़ोनी है जहाँ आसे तुम कौन गोटे पॉइंट लिखिदेवन कि बिलीव मी टॉपर मानकर अपना आंसर थोड़े चेक करके देखिए से माने टॉप एथिपाई हिचंती बिकॉज तांकर सेतिकी कैलिबर और सेतिकी क्वालिटी अछि आ से माने सेतिकी तांकर आंसर रे से सब जिंस गोटे लिखिचंती पण तांकर भलो मार्क आसे इमिति जे रैंडमली किछि गोटे लिखि कि तांको मार्क मिलछि से सब रूमर मार्केट रे यूट्यूब कथा रे बिल्कुल विश्वास करिवे आपण आपण को निजर ही सेटा खराब हबो ओके तो आम कौन जानले दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट आम जानले कि एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 रे कौन करा हेतला कि द सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी एज टू एक्जिस्टेंस ऑफ अ सिचुएशन व्हिच मेक्स इट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate such ऑर्डिनेंस त माने प्रेसिडेंट को सैटिस्फैक्शन इज आल्सो नेसेसरी टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस सो एटा होची दिस इज द ऑर्नामेंटल थिंग्स और एक्स्ट्रा जो जिंसो गुडा आपण ऐड करि पारिबे आ कोन देखंतु फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस फाइनेंशियल पावर समस्त जानचंती आपण आ नेशनल इमरजेंसी अछि देन आपनकर आर्टिकल 356 अछि आ गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी अछि सो एटा गुडी आपण गोटे दिदा पॉइंट रे देखि पारिबे नेक्स्ट कोडा डिप्लोमेटिक पावर बहुत सिंपल दैट जेते गोटे इंटरनेशनल ट्रीटीज हो एग्रीमेंट हो दैट शैल बी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगेन मिलिटरी पावर रे आपण समस्त जानछनी द मिलिटरी पावर इन द सेंस इट विल बी द हेड ऑफ द जेहेतु प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर इन द आर्म फोर्सेस तो प्रेसिडेंट निजे गोटे डिक्लेयर वार करि परिबे पीस को भी कंक्लूड करि परिबे एटसेट्रा एंड एटसेट्रा आउ गोटे कोन पार्डनिंग पावर कोन कि फॉर एग्जांपल पार्डनिंग पावर साधारणतः कोन कोन आसी कि इट कैन ग्रांट पार्डन रिपाइव रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट टू एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 72 लुक एट दिस अगेन ये जो these are called as writing better answer otherwise सब तो आंसर अछि बट व्हाट इज दैट राइटिंग बेटर आंसर गोटे कथार नाही आपण समस्त सुनिथिबे आई डोंट नो वेदर यू हैव लिसन्ड और नॉट गोटे कथार अछि गोटे हिंदी रे गोटे कथा अछि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी है बाकी सब नौकरियां हैं एटा गोटे कथार अछि माने इंडियन जदि आपनकर ओपीएससी कथा कहबी सो ओएस इज एन ओएस एक नौकरी है बाकी सब तो नौकरियां हैं कहडा बुझंदो all of have written a general answer but you have written a better answer so this is what makes your answer better okay तो एठो हमें जान ले that ए पॉइंट्स गुडा and finally अपन कोन करि पारे constitutions the president is empowered with the power to grant pardon in the following situation punishment is for offense against a law किबा military court किबा sentence of death simple मु टिके समरी कर दोची मु कोन कोन कहली I have given you two options either you use the introduction 1 or you use the introduction 2
simple, and this is the transition mu kahidili what is the role of the transition statement. Then executive functions को केमिति आपण लिखिबे, points गुडा को केमिति क्रॉस कर देबे, केमिति आपण फिल्टर्ड करि परिबे. What are the ornamental things मुडा कहितले कि example use करंतु, articles use करंतु. Okay, these things will make your answers much more better than the compared to others. Examples again use करि परिबे आपण एठी. Okay, articles use करि परिबे, and look at this examples, you can use it. बेसी नै जदि आपण अल्प केसे मन रखि दै चंती, it will be more than sufficient. ए आंसर ता क्लियर समझ को? All of you are clear about this answer? Clear? हाँ सर. Yes, sir. सर क्लियर जे गोटे डाउट अछि सर. हां सर डाउट होची माने इंट्रोडक्शन आपण जेमति किछन सेमति मु लिखि छि, ट्रांजिशन स्टेटमेंट भी सेमति अछि, बट बॉडी पार्ट रे सर मु एमति डिस्क्रिप्टिव टाइप न लिखि कि ताको गोटे माइंड मैप टाइप रे मु बनै कि सर लिखि ना, एटा तो डिस्क्रिप्टिव न हो, ये भी बुलेट पॉइंट. मु खाली हाँ, आपन को अल्टरनेटिव लिखि छि बोली आपन को डिस्क्रिप्टिव देखा जाउछि, बट ऑल ऑफ दीस आर बुलेट पॉइंट्स. सर मु बेसिकली कोन ना माइंड मैप जेमिति बना जाए मु सेही टाइप रो फ्लो चार्ट टाइप रो बनै कि लिखि छि, माने पावर्स लिखि देल, पावर्स एंड फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लिखिली, ताको डैश करी सेठी तीनटा पॉइंट लिखि देली, तापर फाइनेंशियल लिखि सेठी चारटा पॉइंट लिखि देली, एमति करी करी मु जाइतली, तो कंक्लूजन जस्ट खाली नॉर्मल लिखि देतली. एटा भी चलिबो कि सर? जदि आंसर आपन को सर एटा चलिबो, हां चलिबो. कि जदि सर क्वेश्चन आपन को सर इज इट बेटर, तन मतलब लागो बेटर करि पारिबे आपन. ओके सर. बुझि पाले मु कहैटा? हां सर. चलिबो कि हां चलि जिवो एटा, बट इज इट बेटर? इट कैन बी बेटर. मु तो देखिनी आपन को, मु देखि सारे, देख साला पर मु आपन को गोटे फीडबैक देबी कोन से. ओके ओके सर. चलो, नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. सेकंड क्वेश्चन देखंतु. दिस इज मु कोन कहली, ये होची पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स रिलेटेड आपन को क्वेश्चन. कोन क्वेश्चन? व्हाट इज ई गवर्नेंस? डिस्कस द फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट ऑफ द हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस. तमाने एठी दीटा पार्ट अछि. गोटे होची आपन को पचार छै व्हाट इज ई गवर्नेंस, ये होची फर्स्ट पार्ट. तो हमें प्रथमे एड्रेस कोन करबा कि व्हाट इज ई गवर्नेंस. तापर आ गोटे कोन एड्रेस करिया पे से कहूची जे हैदराबाद डिक्लेरेशन जो रिसेंटली हिची ई गवर्नेंस ऊपर ता ऊपर किछि लिखो. तो हमरो काम कोन रहिबो? ए क्वेश्चन ता केते जण लिखि छथि? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन दिस आंसर? Yes, sir, I have attempted. यू हैव अटेम्प्टेड? Yes, Okay. sir. ठीक अछि. सर मु अटेंड करछि. ठीक अछि. तो ए क्वेश्चन ता हम केमति लिखिया? फर्स्ट अपन कोन लिखिबे? ई गवर्नेंस एमति अंडरलाइन कर देले. तापर गोटे डायग्राम कर देबे. ई गवर्नेंस रे कोन कोन अछि, कि प्रोसेस अछि, ए वाला डायग्राम मोड कर देबे. माने एमति डिजाइन न करिया दरकार. सिंपली अपन ई गवर्नेंस लिखले, एमति पीपल कर देले, एमति रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस. सिंपल. तापर डायरेक्टली अपन आसीबे डेफिनेशन ऊपर. एंड बिलीव मी, दिस डेफिनेशन इज द ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन. माने गवर्नमेंट रो जो डेफिनेशन, this is the government approved definition. Sir, Okay, yes. sir, I have mentioned about the definition from second ARC report. बढ़िया बढ़िया, ठीक अछि. तो सेही वाला ऑथेंटिकेटेड आपण एमति जदी सेकंड एआरसी मेंशन करछन, आपण लिखि दै परबे अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी. Yes, sir, I have written according to second राइट ARC. बहुत बढ़िया हो सेही वाला सेटल मेंशन करिवे. दिस इज एन गवर्नमेंट रो डेफिनेशन. मु जते चेष्टा करछि गवर्नमेंट रो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पुट करिया पे चेष्टा करछि. हम आपण गोटे एडवाइस देई परिबी कि गवर्नमेंट रो जो इंफॉर्मेशन गुडा अछि ताकू डायरेक्टली आपण कॉपी पेस्ट करि पारिबे. बुझी पाले? तो तार किसी प्रॉब्लम होबनी. एंड तांको भी भल लागिवो, जे भी पढिबे से माने भी से गवर्नमेंट रो इंफॉर्मेशन गुडा पढिथिबे, तो ताको आपण कॉपी पेस्ट करके लिखि परिबे, किछि असुविधा नै. नाउ ई कोन हमर देखिबा डेफिनेशन ता आपण जानिबा. देखंतो हमर मुख्य ऑब्जेक्टिव कोन? मुख्य ऑब्जेक्टिव होची एया न हो जे व्हाट इज ई गवर्नेंस ता ऊपर 5 पेज लिखिबा. हमर मु कहिबे जे यार जो दिया है जी, यार जो रेशियो होची, ये होची 3 मार्क, ये होची 7 मार्क. यार रेशियोटा सेया. तो 3 मार्क भडे आपन लिखिया पड़े, बाकी टाइम आपन स्पेंड करिवे हैदराबाद डिक्लेरेशन ऊपर. तो एठी कोन रहला? व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस is using information and communication technologies such as wide area network, the internet, the mobile computing at various levels of the government and the public sector and beyond for the purpose of enhancing governance. Look at the words. A word guda ko use kara pe chesta kari. The application of ICT, I think somebody was asking the question ki mate pacharle jo SC kotha pacharle. Who is that person? SC जो शॉर्टकट गुडा को who was asking? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखंतो, look at this. मुडी कोन लिखे जी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT. Yes, sir. Yes, the sir. application of ICT. Did you understand मु कोन कहबे चाहली आपन Yes, को sir. इस समय? Yes, sir. बुझी पाले? ता माने आपन जदी प्रथम रो ICT लिखि देबे इठी,
मु किछि भी जानिनी व्हाट इज आईसीटी तो मु प्रथमे जणै देली जे आईसीटी अर्थ एया ब्रैकेट रे लिखि देली Sir, आईसीटीएस हां सर इवन आंसर रे मु भी आईसीटी यूज करछि ब्रैकेट रे लिखि छि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी राइट बट किछि किछि जगह रे वर्ड Exactly. लिमिट क्रॉस हि जो बोली मु जान माने एग्जैक्ट मिस नहीं कर आपण वर्ड लिमिट टाकू जो इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन ताकू दबाक ही पड़िबो ताकू इग्नोर यस करिवे सर यस आपण सर वर्ड लिमिट का अलगा जगह रे रिड्यूस करंतो बट डू नॉट ट्राई टू रिड्यूस हियर बुझि ओके पछी सर ओके सर ओके तो सर थैंक यू आईसीटी सो द मच एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी नाउ एठी मु कोन वंस मु जानि गली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी या अर्थ मते बारंबार रिपीट करिया पड़िबो to inform the application of ICT to transfer the efficiency, effectiveness, transparency, accountability. These are very important, my dear. All of you try to understand. এই যে ওয়ার্ড গুড়া কোন ওয়ার্ড গুড়া transform the efficiency, effectiveness, transparency, accountability of exchange of informations and transactions. Of exchange of information of transaction. Exchange অর্থ দুইটা জিনিস between the governments, between government agencies, between government and the citizens, between government and businesses. This is your e-governance. सर सर एटा बेटर होबो कि जदी ईच एंड एवरी जिंस रे किछि एग्जांपल लिखि दे जेमति G2B पई Got it. मु यूज करिछि ई नाम हाँ ठीक अच्छे खाली आपण से शब्द गुड़ा दे देबे परियो हाँ सर ओनली एंड G2G पई लिखिछि सर प्रगति एंड CSC 2.0 मु जस्ट किछि जदी गुटे एग्जांपल दे दोछि यस आपण देई परिबे बट डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन ओके सर यस काहे कि ना आपनकर जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो 10 मार्कर हाँ इट्स ओनली क्वेश्चन 10 मार्कर सर हाँ 10 मार्कर ये 3 मार्कर थिबो ये 7 मार्क पाखा बाकी थिबे तो डू नॉट ट्राई टू Okay, sir. गिव टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट इज ई गवर्नेंस सी खाली Okay, पचार से व्हाट इज ई गवर्नेंस सी पचार जे ई गवर्नेंस रे एप्लीकेशन कोड यस जदि सर आपण दबा सपोज बिटवीन द गवर्नमेंट्स आपण एठी गोटे किछि दे देले खाली शॉर्टकट दे दियंतो डू Yes, नॉट sir. एक्सप्लेन द व्हाट इज ई नाम इज दिस नॉट रिक्वायर्ड यस सर बुझी पाले तो वर्तमान Yes. आमे जिबा कि हैदराबाद डिक्लेरेशन अगेन जो एई जो इन्फॉर्मेशंस ता दिस इज डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो तो आपण एज एग्जैक्टली याकू फॉलो करि परिबे किछ असुविधा होबे जो इन्फॉर्मेशन मु आपन को देइछि पाखा बाकी केतेटा पॉइंट अछि 15टा पॉइंट अछि 15टा पॉइंट अगेन मु कहिबी चेष्टा करिवे गवर्नमेंट रो जो जहा लिखा है एज एग्जैक्टली ट्राई करंतु लिखिया पई इट्स ओके जदि हेई परने चलिबो बट एटलीस्ट चेष्टा करिवे ता पाखा बाकी लिखिया पई ट्राई टू रीच टू दैट लेवल सो हम जानिबा कि हैदराबाद डिक्लेरेशन कोन हेति केबे हेछि देखो दिस इज कॉल्ड एज अनदर फैक्टर समस्त द पॉइंट्स लिखिथिबे जदि जानिथिबे बट व्हेन यू राइट डाउन कोन लिखछन एठी कि द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स and Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India, in collaboration with the Government of Telangana, organized the 24th National Governance on E-Governance at Hyderabad during 7 to 8 January 2022. So when you write, I know sometimes it is difficult to remember a lot of things, especially age is insogoda. टिके मन रखिया पे टिके असुविधा है, but if you can do that, again मु कहूची सो कुहा जाय ने कि अलगा पिला ए इलेक्शन में मु कोन एम दिलेक्सी मोर आंसर मु एक्स्ट्रा दिटा मार्क पाई बिकॉज ऑफ दिस वन तो आइबटे कोन लिखिबा कि अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द ई गवर्नेंस इवन आई हैव नॉट यूज्ड द नेम आल्सो यू कैन सी इट द ई गवर्नेंस लैंडस्केप ऑफ इंडिया हैज रेडिकली चेंज्ड इन स्केल स्कोप एंड लर्निंग पैराडाइम्स तापर देखिबा कोन कोन पॉइंट माने एठी कोन लिखा है व्हाट इज दैट क्वेश्चन कोन थिला क्वेश्चन आया थिला कि फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट कोन कोन होबो माने ई गवर्नेंस अडॉप्ट हला पर हमर कोन चेंजेस आसी परियो दी ज्यादा चेंजेस केतरा पॉइंट अछि 15टा पॉइंट कोन चेंज आसी परियो कि सिटीजनशिप टू ब्रिंग सिटीजन एंड गवर्नमेंट क्लोजर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म transform citizen services through use of technology by leveraging look at the words by leveraging these words you have to use by leveraging the artifacts are you understanding are you trying to appreciate the words मुकाडा बुझी परछन all of you are you trying to understand कोन कहय चाहूची there are two types of things one people who will write Rama is going I am eating you are looking ये होची गोटे प्रकार लेखा and when you are using this specific जो शब्द गुडा इठी अछि जो टेक्नोलॉजी by leveraging the artifacts of India stack included Aadhaar UPI DigiLocker Umang eSign consent framework the fast track implementation of national level public digital platforms in the key social sector health education agriculture etc operationalize the data governance framework to facilitate the data sharing within the government to facilitate governance framework
These are keywords. These are keywords. These are keywords. Foster responsible use, emerging technology, AI, machine learning, blockchain, 5G, AR, VR, etc. Social empowerment. These are keywords. Again, are you understanding कि आपन को आंसर काहे की बेटर because you have written this point. ए जो वर्ड गुडा को आपन स्पेसिफिक शब्द गुडा को आपन यूज करछन्ती. Ensure, look at this, resilient government infrastructure, keywords, with robust technology, keywords. Sir, one thing, sir. Yes, Sir, you have mentioned 11 number CP grams. 11 number? CP grams. Sir, actually, I have also mentioned CP grams, but I didn't able to recollect the full form of CP grams at that time. So I have just written CP gram. It's okay? Sorry. Okay, sir. एते डिटेल्स से सीपी ग्राम लेखिया पूर्व आपण एते गुडा जेमति लेखि जंदी तार ऑटोमेटिक इंप्रेशन पळे आस्तिबो बुझि पाले. Okay, sir. Then uplift good governance, keyword. Replications of award projects under National Award for E-Governance 2020 and 21. Adoption of e-offices version 7.0 in all ministry and departments. Use of technology propagating end-to-end service. Look at this. These are keywords. Delivering without human interface to citizens at the grassroots level. Make digital the primary aspect of governance service. Design, delivery, and provide. Design, delivery, and provide requisite infrastructure to achieve that. This is what should be your answer. ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଲେଖି ଦେଇଥିବେ ନା 10 ମାର୍କରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 7 8 ହାଇଏଷ୍ଟ ଯେତେ ଅଛି ପସିବଲ you will be getting it provided you have used these specific words. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି let me tell you general answer କେମିତି ହବା ଦରକାର କି digital governance is very good, it is important, and nowadays what happens, government is using the digital platform such as Aadhaar, UPI, and state governments are also enabled for using this digital framework. Because of huge internet penetration in India, the digital platform has been drastically changed, and it has reached to various levels. How much mark you will be getting if you like it this way? Below average. Because आपनकर आंसर से दम नाही से जो गोटे लैंग्वेज थाए कमांड थाए आ ये लैंग्वेज कमांड मु कहिबिनी जे एटा कोनोसी स्वर्गरु आसीबो एई लैंग्वेज कमांड ऊपर ओनली जेतोळे प्रैक्टिस करिबे आ पढिबे जेतोळे ऑटोमेटिक आसीबो एथरो नो डाउट अबाउट इट कोनोसी भी प्रॉब्लम ही हबनी प्रैक्टिस करिबे एटा को डॉक्यूमेंट को पढिले दि तीन थरो लिखिबे आंसर ता ओके ई गवर्नेंस रे एई पॉइंट ता को ई गवर्नेंस रे जहा क्वेश्चन आस्तियो एई पॉइंट्स को टिके एपर सेपर करी लिखिबे क्लियर समझते ऑल ऑफ यू आर क्लियर लेट मी नो sir. Good evening, sir. Yes, sir, can we mention that point that in terms of the e-governance, we can directly put the example of CoWIN, that site, how India used in the pandemic situation, and it make not only nationalization but make it more internationalization. आलोक आपनकर पॉइंट भलो अछि बट जदि क्वेश्चन एया हितांदा कि व्हाट इज ई गवर्नेंस एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस देन आपण से पॉइंट को इंप्रूव कर पाथांदे बट एठी क्वेश्चन कोन इट इज एन ओपन एंड शॉर्ट क्वेश्चन ये कोन पचाछि व्हाट इज ई गवर्नेंस डिस्कस फ्यूचरिटी इंपैक्ट ऑफ हैदराबाद डिक्लेरेशन ये क्लैरिफाई कर देछि कि हैदराबाद डिक्लेरेशन ई गवर्नेंस रे कोन हेछि दीज आर द पॉइंट्स हेछि Yes, sir. Sorry, sir. Question na sir upar ta koi second part of देखने e-governance रही. बाकी समझते सर एई क्वेश्चन लास्ट को हमें किछि ई गवर्नेंस रो एग्जांपल देले हबो कि माने इनिशिएटिव डिफरेंट स्टेट्स मानकर देखले चलिबो सर ऑलरेडी ऑल द एग्जांपल्स आर गिवन ए जेते गोडा लेखा है जे आपण आ कोन दोछन के सीपी ग्राम्स मेटी एनईएसडीए 2021 ऑल ऑफ दीस आर एग्जांपल्स ओके सर नहीं मु एक्चुअली लिखितली कोन ना सम ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भूमि प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका ई सेवा ऑफ आंध्र प्रदेश ज्ञानदूत ऑफ मध्य प्रदेश एंति किछ लिखतिली सर हां बट जदी फॉर एग्जांपल जदी क्वेश्चन आछि कि व्हाट इज ई गवर्नेंस डिस्कस हाउ ई गवर्नेंस हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड द infrastructure of the governance process or how has e-governance
You can you see gote topic ro varieties of question as paribo. How has e-governance impacted or how has e-governance catalyzed the governance process? Then you can write like anything. Jaha bhi apna example douchanti. Okay. Sir, gote question, sir. Sir, how is segregate e-governance and digitalization of governance? See, e-governance and digitalization of governance jodi ame bujiba, digitalization of governance ro artho, what do I say? Digitalization means it is a transition. माने पूर्वरु मैनुअल होतला वर्तमान आपण डिजिटलाइज करछन सब जिंस. Okay. And e-governance जदि आपण if you look at the closely, let me just open quickly. Both are closely related. गोटे थीन डिफरेंस कोन हम कहिबी. Look at the e-governance means electronic governance. या अर्थ e-governance रो मुख्य उद्देश्य कोन कि आईटी यूज करी कि आमे गवर्नेंस टाको केमिति बेटर करिवा, माने जो पूर्वरु जहा थिला सिस्टम ताको केमिति बेटर करिवा, दैट इज ई गवर्नेंस. किंतु डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस कहिले कि पूर्वरु जहा स्ट्रक्चर थिला ताको हमें ट्रांजिशन करूचे डिजिटल प्लेटफॉर्म को. मो कहडा बुझी परछुंदी. यस, डिजिटल गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस आर इंटर रिलेटेड, किंतु डिजिटल गवर्नेंस रो अर्थ होची ट्रांजिटिंग फ्रॉम एक्जिस्टिंग टू डिजिटलाइजेशन. ई गवर्नेंस रो अर्थ हो कि जहा भी हमर इंफ्रास्ट्रक्चर अछि ताको आउट के बेटर केमति करि पारिबा. Although again I repeat, there is not much of difference. आपण सेम जिंसटा को टिके एडजस्ट करके लिखि परिबे, बट पर्सपेक्टिव टा खाली अलगा. यार पर्सपेक्टिव कोन ट्रांजिशन पर्सपेक्टिव, यार पर्सपेक्टिव होची एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव. ई गवर्नेंस होची एम्पावरमेंट एनहांसमेंट, दैट इज ई गवर्नेंस. ओके सर मो क्वेश्चन करिया बेसिक रीजन हला सर हमर ओडिसा रे से जो भूलेख ताको हम सर गोटे गोटे जगह कोजंती द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस आउ गोटे बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटलाइज्ड गवर्नेंस. हाँ एटा ठीक अछि, असुविधा किछ नै. अगेन इट इज होची पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव टा बुझोतो. यस मु केमते बुझेबी. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज सर हां कोन सर हम एमती कहि परिया जे बोथ आर इंटर रिलेटेड but both are not equal. The only yes that is what I mean to say. only कि डिजिटलाइजेशन रो अर्थ होची हमरो पूर्वरु जहा मैनुअल जिंस थिला, पेपर वर्क थिला, ताकू हमें गोटे जिंस को कन्वर्ट करू छी, दैट इज डिजिटलाइजेशन. yes एंड भूलेख जोटा दैट इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटलाइजेशन. पूर्वरु सब मैनुअल होतला, लेखा होतला, दस्तावेज हो पटा हो, वर्तमान ताकू हमें कोन कहला इंटरनेट रे पठो. ये होची डिजिटलाइजेशन. ई गवर्नेंस इज एन एनहांसमेंट. आउ बेटर केमति करी हबो. सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन मन को बेटर केमति पहुंची परिबो, गवर्नमेंट को बेटर केमति पहुंची परिबो, दैट इज ई गवर्नेंस. ऑल्दो दीज आर लिंक्ड. ओके, खाली चेंज कोन पर्सपेक्टिव रे चेंज. आपण आकु केमिति कहउचंती, दैट इज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ दिस. सी मु कहबी सपोज फॉर एग्जांपल एक ग्लास रे एतिकी पानी अछि, आपण कहउछन सर ग्लास रे आधा खाली अछि, मु कहउ जे ग्लास रे आधा भर्ती अछि. ये होची पर्सपेक्टिव. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटलाइजेशन एंड ई गवर्नेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? को पर्सपेक्टिव रे लिखुचंदी एटी होची खाली तफात, आउ किछि नो. yes हम सर एटा एमती कहि पारे माने अप्रोच केमती रहला. अप्रोच ये राइट अप्रोच ता कोन रहया दरकार, आपनकर आंसर रा अप्रोच कोन रहया दरकार, तो सेही हिसाब रे अपन लिखि पारि. सर थैंक यू. आउ कार किछि प्रश्न? एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी अदर क्वेश्चंस? बुझियला मु जति कहली आपन मन को, ऑल ऑफ यू let me know in the chat box or raise your hand. yes sir बुझेला. देवी प्रसाद, धरणीधर एंड आउ के अछंती, फाल्गुनी, प्रभाकर, समस्ते. ओके, तो एक क्वेश्चन है गला. लुक एट दिस क्वेश्चन. what are digital rights? now a question ta again current affairs plus politics. So what are digital rights? एटा काहे के आसे जनवरी मास रे करंट अफेयर्स में आसे. एठी आपण कोड लिखिबे, डायरेक्ट आपण कोन स्टार्ट करिवे रे. जदि आपण पढि छते जानि परिबे जिंसटा को. डिजिटल राइट्स कोन कि द यूरोपियन कमिशन इन अ ग्लोबल, एटा द हिंदू ए स्टेटमेंट डायरेक्टली द हिंदू आसे. ओके,
आपण द हिंदू जदि आपण पढिथिबे ए स्टेटमेंट को आपण पाइ जिवे डायरेक्ट एग्जैक्ट स्टेटमेंट अछि कि द यूरोपियन कमीशन इन अ ग्लोबल फर्स्ट proposed a set of digital rights and principles that aim to protect people's right, support democracy, ensure a fair and safe online environment. Look at this. तमाने डिजिटल राइट्स रो तांकर जो यूरोपियन कमीशन गोटे प्रपोजल दैछन तार ऑब्जेक्टिव कोन लोकंकर राइट्स सपोर्ट डेमोक्रेसी एंश्योर फेयर एंड सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट ताकू केमती लिखिबा लुक एट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एटा नेक्स्ट कोन लिखले माने आकू इंट्रोडक्शन रे टिके कॉन्टेक्स्ट देतले तापर कोन लिखिबे कि डिजिटल राइट्स इंप्लाई द राइट टू प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन सिंपल स्टेटमेंट तापर आपण कोन लिखिबे कि जो यूरोपियन कमीशन रो कोन एग्जैक्टली हिते माने तार तो कोन कॉन्टेक्स्ट कोन लिखिबे कि द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन कवर्स की राइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन such as placing people and their rights as its center, supporting solidarity, inclusion, ensuring the freedom of choice online, fostering participation in the digital public space, increasing safe security empowerment of individuals, and promoting the sustainability and digital future. माने ए जो एग्जैक्टली एटा मु आपन को रेफर करथिली यूरोपियन कमीशन रो जो वेबसाइट अछि उ सेइठु आपन को रेफर करिक देइछि तो आकू आपण एज अ मैनुअल हिसाब रे करि परिबे जदि आपण एज एग्जैक्टली स्टेटमेंट न लिखि परछंती जस्ट राइट डाउन द की पॉइंट्स कोन की पॉइंट्स सपोर्टिंग सॉलिडारिटी इंक्लूजन फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑनलाइन फोस्टरिंग पार्टिसिपेशन तो आई हैव ट्राइड टू गिव यू द ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मु जो टू सोर्सेस रो जो फाइंड आउट करिछि मु चेष्टा करछि जे आपण बाकू ऑथेंटिकेटेड जिंस ओरा सब मिलो तो डायरेक्टली आपण ए जिंसटा को रेफर करि परिबे तापर आपण कोन लिखिबे कि it also addresses issue of equal distribution of internet access regarding the economical background माने डिजिटल राइट्स रे या भी जिंसो कि समस्त को इक्वल एक्सेस मिलो ओके तापर आ कोन कि ऑल्दो इट देखो दिस इज द ट्रांजिशन फेज दिस इज द ट्रांजिशन लाइन ट्रांजिशन कोन लिखले कि ऑल्दो द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन की टू द इंटरनेट रिवोल्यूशनरी इफेक्ट ऑन मॉडर्न सोसाइटी data intensive technology may at risk creating a digital environment where businesses and firms can be track, analyze, predict and even manipulate human behavior. या तो आपण कोन कहै पे चाहउछंती आपण कहउछंती कि ऑल्दो डेफिनेटली डिजिटल स्पेस रे बहुत बढ़िया अछि बट यार गोटे डिमेरिट भी अछि कोन डिमेरिट हेई पारे जेमति फॉर एग्जांपल हमरो आपण समस्त जानथिबे कि गोटे ह्यूमन बीइंग को प्रेडिक्ट आज के जो फॉर एग्जांपल सपोज आपण मानि लियो तो जति कथा वार्ता भी होछंती किबा इंटरनेट रे जति कोन से कारण सर्च करले सपोज बाइक किबा कार देखिबे फेसबुक किबा आपण इंस्टाग्राम जति ओपन करिबे ऑटोमेटिकली सेही रिलेटेड सेही प्रोडक्ट रो पोस्ट गुडा आसी केमिति आसी दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो से माने से सब जिंस ट्रैक करछन से आपण एक्टिविटी कम करछन इन द इंटरनेट ओके तो दैट कुड बी रिस्क तो एको ट्रांजिशन करले आ कोन लिखि परिबे आ लिखिबे कि टाइप्स ऑफ डिजिटल राइट्स कोन प्रकार डिजिटल राइट्स अछि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस आउ कोन अछि प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन आउ कोन अछि राइट टू बी फॉरगेटन माने मु चाहू छी मो डेटा स्टोर न हो दैट इज राइट टू बी फॉरगेटन मोर प्राइवेसी मु प्रोटेक्ट करिया पे चाहू छी ओके आ गोटे अछि फॉर एग्जांपल एठी गोटे आपण लिखि परिबे कि इट हैज ऑलरेडी बीन इन्वोक्ड इन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना यूएस साउथ कोरिया एंड इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स जो माने माइनर ग्रुप रछन समान को केमति प्रोटेक्ट करिया जाय परिबो ओके तो एटा हे गेला कोन प्रकार डिजिटल राइट्स रो को प्रकार लास्ट को कोन देबे कि कोन चैलेंजेस माने डिजिटल राइट्स रे प्रॉब्लम कोन अछि चैलेंजेस कोन अछि दीटा मु एटी मेंशन करिछि लिमिटिंग चिल्ड्रन्स डिजिटल राइट्स द पॉलिसी अप्रोच ऑफ टू चिल्ड्रन्स डिजिटल राइट्स इज फ्रीक्वेंटली कॉशन एंड रिएक्शनरी एज मेनी गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ लिमिटिंग चिल्ड्रन्स राइट इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन माने पिला मानकर एक्सेस जोटा अछि अब जाथिबे कि YouTube दुई प्रकार गोटे YouTube नॉर्मल लोक मानकर आ गोटे YouTube किड काहे कि एटा YouTube किड करा जाय सो दैट YouTube चाहू छी कि जो एडल्ट कंटेंट गुडा अछि जो गुडा कि छुआ माने न देखिबा कथा से कंटेंट गुडा को से माने सेपरेट कर देछंती और जो न देखिबा जिंसटा को YouTube किड्स से माने देछंती इमे बहुत सारा एप्लीकेशंस अछि तो सेटा गोटे चैलेंज हे पारे आ गोटे चैलेंज कोन सोशल मीडिया रे इंटरफेरेंस जोटा जस्ट मु टिके पूर्व आपन को एग्जांपल देली कि आज का डेट रे सोशल मीडिया रे एते जिंस सब कवर अछि तो दैट इज समटाइम्स डिफिकल्ट माने हमर सर्वाइव जिंस करिया डिफिकल्ट इन द सेंस सब किछ इंफॉर्मेशन इज अपलोडेड इन द फेसबुक किमा इंस्टाग्राम किमा व्हाट्सएप रे अपन शेयर करछन एंड ऑल ऑफ दीस आर ट्रैक्ड ऑल ऑफ दीस आर सेव्ड इन एंड स्टोर एट वन प्लेस नो डाउट समान कहउछन जे नाइ हमें शेयर करूनु किमा काहते करूनु बट व्हाट इज द गारंटी इन बहुत समय रे कोन आइछि आपनकर ट्रैक करा जाउछि ओके आपण आ गुटे जिंस देखि दिबे फॉर एग्जांपल आपण जदी आपण गूगल मैप एक्टिवली यूज करछन आ आपनकर लोकेशन ता ऑन थिबो गूगल मैप कोन करे कि मास एंड रे से आपण गोटे ईमेल पठै दिए कहे जे
कि एई पूर्व मासरे लुक एट आपनकर फुटप्रिंट कोठी कोठी थिला माने आपण कोठी कोठी जाइछन्ते जस्ट इमेजिन गूगल आपन को जानि छी आपण कोठी कोठी जाइछन्ते तो एई जो जिंस गुडा दैट इज डिजिटल राइट्स तो एठी मु आंसर हम केमति देखिबा बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रे लिखिबा व्हाट इज डिजिटल राइट्स प्रथमे हम लिखले कि ए कॉन्टेक्स्ट ता कोन यूरोपियन कमिशन ऊपर हम जानले ओके तापरे हम कोन लिखले ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऊपर लिखले तापरे टाइप्स ऑफ डिजिटल राइट्स कोन लिखले तापरे हम कोन लिखिबा चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल राइट्स दैट्स इट ये होछि आपनकर मॉडल आंसर यस कार जदि किछ कहयर अछि प्लीज कहंतु सर एई क्वेश्चन नीड फॉर डिजिटल राइट्स ता लिखिबा दरकार नहीं सर नीड फॉर डिजिटल राइट्स माने आमे डिजिटल राइट्स हमु कोन पई दरकार हां एडी लिखा है जी ऑब्जेक्टिव सपोर्ट डेमोक्रेसी एंश्योर फेयर एंड सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट कोन कोन एडी फोस्टरिंग पार्टिसिपेशन डिजिटल पब्लिक स्पेस इंक्रीजिंग सेफ्टी सिक्योरिटी ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव्स आमको एट एन इंडिविजुअल लेवल कोन दरकार we want freedom of expression and information we want our data to be protected all of these are important clear samajhte yes sudhanshu Yes, sir. subhranshu alok then Yes, sir. falguni sunita samaste बुझी पाले एट आंसर टा केमते होबो चलो आ गोटे देखिबा yes a question that I think somebody was telling the government of India Act 1935 was important in history of India it actually UPSC रे भी सर थोड़ा पछा मोर एक डाउट थिला सर डिजिटल राइट केस रे कश्मीर इशू का ने लिख परिया जो कश्मीर रे 2-3 मंथ्स रे जो शटडाउन थिला इंटरनेट रो well see it depends on the demand of the question 8 is your demand of the question it is not asking you to write in detail about the implication part of the digital rights or where have you think that your digital rights have been infringed it is simply asking you what is digital rights आपण जोटा कहउचंती सर that is excess information which is not necessary in this question जदि सेही भला कोनसे क्वेश्चन पड़े जोथरे कि सेही टाइप रो इंडिकेशन दिया है कि डिजिटल राइट्स कोन आ कोठी कोठी आपण भाबुचंती कि लोकमान को केते इंपैक्ट करै छै डिजिटल राइट्स देन यू कैन राइट प्रोज एंड कॉन्स तापरे उटे केस आस्तला साजिदा फिन आई थिंक ना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रे जोठी कि डिजिटल राइट को अंडर आर्टिकल 21 रे एक्ट इंक्लूड कराइतला तो से जिनसटा भी एठी मेंशन करियो यस यू कैन रेकमेंड यू कैन राइट डाउन दैट ए जिनसरे सेटा आपण लिखि परबे बट जो कंट्रोवर्शियल पार्ट गुडा जोटा इंपैक्ट रो पार्ट गुडा दैट इज नॉट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हियर सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन गोटे टॉपिक रो बहुत सारा जिंस अछि बट यार डिमांड कोन डिमांड हिसाब रे आपण डिलीवर करिवे आ वर्ड लिमिट कोन फॉर एग्जांपल जदी ए क्वेश्चन दा जदी 200 मार्क्स रे पचारता 200 वर्ड्स रे जदी पचारता देन मे बी आपण गोटे दिटा एग्जांपल देई पारथाते ओके ओके थैंक यू Now, the Government of India Act 1935, this question was also asked in UPSC exam, UPSC IS related question, mains exam. ताको केमती लिखिबा again बहुत सारा जिंस अछि तो 10 मार्क रो केमती लिखिबा I think somebody was asking कि sir how to write the 10 marks question. Yes, correct. Who is that person? कि गोटे कहउतले ना मो पारे कंटेंट बहुत अछि बट आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट somebody was telling in the beginning चलो ठीक अछि इट्स ओके तो हमरो जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अछि एई क्वेश्चन ता तो लंबा आको आपण लिखिबे जदी पेज भरि जबो बहुत जिंस अछि एतरे बट आको हमें गोटे कॉम्प्रिहेंड करी कि 150 वर्ड्स वाला 150 वर्ड्स तो आंसर के केमिति लिखिबो हाउ टू राइट इन 150 वर्ड्स filtering the necessary information कोन आपण देई परिबे एज एक्जेक्टली एथिरे आपण को स्कोप मिलिबन जे अधिक किछि गोटे एक्सप्लेन करिबा कोन लिखिबे डायरेक्ट लिखिबे इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 marked a milestone keyword in advancement of the constitutional democracy in India. Indian constitution has incorporated some of the features of this act as successful federal division of the subjects, office of governor, emergency provision, etc. Direct 10 मार्क पई इमति लिखिया पड़ी आपन को तापर आपण कोन लिखि परिबे
कि the act provided for division of subjects such as federal list, provincial list, concurrent list. Federal list होची central jurisdiction, provincial होची under the control of provinces, concurrent list होची both have jurisdictions. तापर आपण कोन लिखिबे कि the provisions of act never came into effect since the states did not join the federation. However, the act could not be considered as a laying down the foundation of the constitution. Some of the features of the federal constitution and how the 1935 act compared as follows. Number one, it is written constitution to provide for a separation of power. The 1935 act was passed by British Parliament, which could make amend and changes, take away the powers and responsibilities in electorate. Number 1 point. Number 2 point, independent judiciary to adjudicate that and decide upon issues arising from the division of the powers. Colonial India had a judiciary which was malleable to the dictates of the British necessities. These are keywords, mane polity language joda mu kahe. Third point, rigid constitution to protect from unilateral changes. 1935 act was at mercy of British Parliament. The governor, keyword again, these are keywords. The governor general had all encompassing keyword power and could make any changes as it desired. Fourth point, supremacy of the constitution. The act 1935 did not provide for an Indian constitution. It only made arrangements for dual government. Okay, con point, written constitution, independent judiciary, rigid constitution, supremacy of the constitution. This is conclusion. Conclusion hame kon likhiba ki thus the 1935 act from laying down a constitutional federation was aimed to perpetuate, keyword, British rule and designed to appease, again keyword, corrupt nationalists. The act also had a regressive provisional such as separate electorate had divided the rule as its guiding philosophy. Look at the language which it has been used in this answer. If you can try to appreciate and write down some of the points, यार जदि आपण 30% 40% भी आपण जदि appreciate करके लिखि परछन से word गुडा use करि परछन्ती, this is your 150 words. अधिक लिखिया दरकार नै, it is more than sufficient. I understand 1935 रे बहुत किछि अछि लिखि परियो, but ताको केमति हमें comprehend करे कि for 150 words how to write this answer. This should be your model answer. Clear all of you? Namaste. Any doubt? Kanhu Charan and Devi Prasad and Prabhakar, baki samaste. Alok? Yes. Chalo. Okay. Now we got a question. I think somebody was asking कि एटा होची एक क्वेश्चन दा होची आपनकर 20 मार्क 250 words 20 मार्क क्वेश्चन आपको केमति ले somebody was asking in the beginning. Who was that? Yes sir, मु पचारथि सर. आपने पचारथि. चलो तो आपको केमति लिखिबा प्रथम जिंस एटी दीटा प्रथम क्वेश्चन पढंतो. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? कोन पचारछि कि डज राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंटाइल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली? ता माने कि हमर अधिकार अछि कि क्लीन एनवायरनमेंट, या अर्थ कोन कि हमर जो रेगुलेशन जो दीपावली रे हमें जो बाण गुडा फुटाऊ तार रेगुलेट करिया पई भी या अंडर आसछि कि? ये होछि क्वेश्चन रो पार्ट 1. सेकंड पार्ट कोन पचारछि कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21, डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 कोन? व्हाट इज आर्टिकल 21? Right to Yes. life. To life and Life and liberty. personal liberty. Right to life and Personal Liberties. personal liberty. Personal liberty. Okay, so this is part 2 of the statement. Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and the judgments of the Supreme Court in this regard. How to start? Look at this answer and try to appreciate. Starting introduction. कौन लिख ले? Article 21 of Indian Constitution guarantees right to life and liberty. Simple statement. Subsequently, judgments by Apex Court, especially after Menka Gandhi case, have enlarged its scope and the right to clean environment has been brought under its ambit. Look at this is called as the impactful answer, how to transit and how to connect these two statements. Statement 1 और statement 2 को connect केमति करिबा? कोन लिखा है? Article 21 of the Indian Constitution guarantees right to life and liberty. Subsequently, the judgments of the by the Apex Court किबा Supreme Court, whatever you wish to write, especially after the Menka Gandhi case, have enlarged. माने जो Article 21 the scope ता को enlarge कर दिया जायछि, and also include clean environment has been brought into its ambit. Okay,
introduction. Next आमे कोन लिखिबा कि issue कोन issues with burning crackers underline दे देले with various types of crackers that the level of pollution cause extremely high, which makes the air unbreathable, noise levels intolerable. Almost every year, Delhi and the NCR regions with spike. Look at this is extra. This is ornamental things. The region also report 30 to 40% increased cases of wheezing, respiratory diseases, etc. during the post-Diwali. ये होची issue. Next कोन balance between the right to environment and right to religious freedom. आपण जानछन्ती we have Article 25. Article 25 right to religious freedoms ता माने दीपावली हिंदू धर्म रो गोटे बहुत बड़ा फेस्टिवल तो आमे धर्म को मानिबा ना एनवायरनमेंट को मानिबा अगेन कोन दरकार हमको गोटे बैलेंस व्यू दरकार एंड हाउ टू डू द बैलेंस व्यू एट लिखिबा कोन सिंपल देखंतु all freedoms come with certain reasonable restrictions to ensure the fundamental rights to clean environment. The government may take steps to regulate burning crackers during Diwali, but there is a need to balance between the right to environment and right to religious freedoms. In 2000, again, look at this is called as the X factor, the extra things. In 2015, the Supreme Court dismissed a petition which was aimed at putting blanket ban on bursting crackers on Diwali, designating a particular place for bursting crackers. Again, next ban on is amar jota problem hochi, is it that only ban kardale solve hejibo? Na. Ban on burning crackers is not the solution. Kon likhi paribe eti point totality of the causes of pollution need to be tackled. The burning of the crackers is just a 2-day event. amar jo Delhi रे जो problem होची दीपावली मात्र 2 दिन पाई होची बट ता बाद भी बहुत सारा जेमति आपण एबे रिसेंटली जो चली छी आपनकर जो अर्बन पॉल्यूशन से गेला किबा जो से माने पंजाब हरियाणा रे से माने फसल हे साला पर जोडा पुडी दोउछन जाई दोउछन कल्चरल सेंटिमेंट बिटी गोटे अछि हमर धर्म हिसाब रे भी सेटा गोटे अछि इम्प्लीमेंटेशन इशू अछि ओके आ गोटे बस्टिंग क्रैकर्स इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम कि मु करे पे चाहू छी कि न करे पे चाहू छी जेमति फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड रे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करू न्यू ईयर सेलिब्रेट करू तले दीपावली काई सेलिब्रेट हे परिबो तो फाइनली अपन कंक्लूजन कोन लिखिबे कि it is necessary to exercise certain precedents and cautions in this situation and best way to go about it historical tackle the problem of pollution implementing various guidelines along with regulating bursting crackers steps to sensitize people again keyword about the environment problems is a better solution. This is what is called as a balanced answer. Clear? Janigale kon answer? This is the beauty, this is the issue, this is the balance, this is what you are suggesting, and this is what is your conclusion. Simple. Raise your hand if you have understood this. Sir, whether we can add comment for that Supreme Court's verdict or Supreme Yes. Court's decision? Yeah, can do that. Yes, sir. Okay. How take time achi? Should we just discuss remaining 2 questions? How take time re? Chaliba samasto dora? हाँ सर चलो Na Yes, besto sir. asun samaste. No, sir. Interesting laguchi to? Na bore Yes, laguchi? No. Yes, चलो ठीक अच्छे now एक गोटे क्वेश्चन देखंतु the how does the president of India can implement accountability on the executive by his or her discretionary power माने president of India गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केमिति एग्जीक्यूटिव आपण जानथिबे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियल तीनटा जोटा अछि याको केमिति से गोटे अकाउंटेबिलिटी करिक रखि परिबो याको आंसर केमिति दबा अगेन जदि लक्ष्मीकांत पढि जंदे आपण पॉइंट तो जान दै जंदे बट हाउ टू सर दैट इज अ प्रॉब्लम सर हाउ टू मु कोन कहबे हाउ टू पिक अप दोस पॉइंट एंड पुट इट इन अ सच अ वे सो दैट इट बिकम्स एन आंसर दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे ऑलराइट नाउ एठी हम कोन लिखिबा कि the president of India is the first introduction. The president of India is the first citizen of the country and the de jure polity word, head of the state, and he is also referred to an emblem of unity. Look at the language, emblem of unity, integrity, solidarity of the nations. The prime responsibility of the president are to preserve, protect, defend the constitution and the law of India according to Article 16. Okay, तापर आपण कोन लिखिबे this is what you get the brief introduction तापर कोन लिखिबे कि accountability को केमती इंप्लीमेंट करछि what are the points you will cover first the doctrine of aid and advice ता अर्थ कोन article 74 रे आपण समस्त जानछथि कि the president of India shall take aid and advice by the council of minister headed by the prime minister okay
सो एई केस रे भी आपण एटा पॉइंट मेंशन करि परिबे आ कोन दे परिबे कि द प्रेसिडेंट पावर ऑफ पार्डन आर्टिकल 70 look at this look at the answer I have used here 74 I have used here article 72 72 74 72 I am using those articles एटी कोन लिखिबा the article states that the power of the president to accord pardon etc and to suspend remit commute sentences in certain cases this power of the pardon shall be exercised along with being a discretionary power as it explicitly uses the term power and henceforth again sir extra call likhibi this is the extra point kon eta extra point article 74 shall not be pattern here but this has not always been in the case I am giving example ଗୋଟେ case ମୁଁ ଦେଇଦେଲି କଣ ଦେଲି in Moruram versus Union of India and Keher Singh versus Union of India the courts determined that the power under article 72 is to be exercised with respect to aid and advice of the central government this single statement will make your answer way beyond than the expectations of the evaluator so try to appreciate these important points ଆଉ କଣ ଲେଖିବା कि the presidential power assent to bills कौन कौन अछि आपण समस्त जानछथि कि सस्पेंसिव वीटो कौन पॉकेट वीटो कौन अगेन सस्पेंसिव वीटो समस्त जानछथि पॉकेट वीटो समस्त जानछथि आपण कौन एक्स्ट्रा लिखछथि what have you written the ornamental point or extra point look at this a suspensive veto was used for the first time by Dr. APJ Abdul Kalam when he returned to the office of profit bill 2006 to the parliament these are ornamental things okay look at this the power of pocket veto eta mu kon kahili I have used this suspensive veto pocket veto good example mu dechi kon dechi eta the power of pocket veto was used by former president Gyani Jali Singh 1986 when he refused to grant assent to the post office amendment bill this will make your answer way beyond okay आउ कोन ड्यूरिंग हंग पार्लियामेंट अपन समस्त जानछन जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निजे डिसाइड करि परिबे डिस्क्रिशनरी अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेते कोन हबो कि फॉर एग्जांपल गोटे सपोज कोन रिप्लेसमेंट नाही और सडन डेथ हेगला से समय रे कोन करि परिबे प्राइम मिनिस्टर को भी से डायरेक्टली अपॉइंट करि परिबे आउ कोन एट लिख परिबा लुक एट दिस आई हैव गिवन सर्टेन एग्जांपल्स लाइक फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट हैज टू टेक चार्ज अपॉइंटमेंट द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर दिस इज द की थिंग्स मिस्टर Gulzarilal Nanda was appointed as the caretaker prime minister twice by the then president when Jawaharlal Nehru and the Lal Bahadur Shastri died during their terms. People, so when you write one statement, just one statement, extra, then the students, then your answer will be better. How can responsibility as in a caretaker government? Summoning of the House of the Parliament according to Article 85. I'm sure that upon 40 the issue point. Dissolution of Lok Sabha भी से जिनसटा अछि then finally अपन कोन लिखबे this is the conclusion कोन लिखबे the president assumes the true responsibility as a head of the state with the exercise of his discretionary power the discretionary powers vested with the president empower him with authority to check arbitrariness of the executive wield a substantial amount of control over them thereby protecting interest of vast majority in the country and fulfilling the responsibility of a true leader conclusion okay so this is how you should write these answers last question very important question by the way critically analyze this was also asked gote alga format re pachar jaitla in IAS exam re UPSC re critically analyze the difference between fundamental rights and DPSP discuss the relevant cases see there are two parts try to understand this is the first part critically analyze fundamental rights of DPSP भितर तफात कोन अछि आउ ए जो तफात भितर जो कॉन्फ्लिक्ट तयारी हिची किछि एग्जांपल देगी आपण डिस्कस करंतु these are two parts it's a one of my favorite question and answer as well okay let us try to understand कि यार केमिति हम लिखिबा नाउ एटी कोन लिखिबा कि फॉर एग्जांपल आपण एमिति बुलेट पॉइंट लिखि परिबे कोन कोन पॉइंट लिखिबे कि पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच दे आर मेंशन कोड कोड लिखा हिची कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन पार्ट 3 article 12 to 35 and fundamental rights 36 to 51 DPSPs are mentioned 36 to 51 fundamental rights are mentioned article 12 to 35 एटा लिखि देले प्रथमे what is the nature कोन nature लिखा है माने fundamental rights ର nature टा कोन DPSP ର nature कोन कि fundamental rights
in its essence are negative in naturally simply because they prohibit the state from taking any actions which may violate the fundamental rights of the citizen. So they are negative connotations. In such case, DPSP's corner, DPSP is such like directive principle of state policies are positive in nature, as it requires the state to do certain things in favor of the citizens. Okay. Then democracy type. Fundamental rights ensure political democracy. Directive principle of state policies help in maintaining social and economical democracy. These are two different things. These are differences. Okay. Then again, adoption source. Look at I don't know mu jani ei jo comprehend ra apno kotu paibe ki nahi, because if you read the Lakshmikant you will be getting the points, but ei jo comprehend way re gote lekhiba, so try karantu ei jinso ta ko tike inculcate kariya pe follow kariya pe. Adoption source, adoption mane course source ram koriche. Fundamental rights samaste janchile US ru ame adopt korche. DPSP is adopted from Irish constitution. Then consequences of violation. Jodi মানে আমি কোন ডিসকাস করছি ভায়োলেট হলে কোন হবে, মানে ডিফারেন্স কোন আছে? যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটস ভায়োলেট হয়, then you can go to either Supreme Court of India under Article 32, or you can go to the High Court of any of the high courts under Article 226. If but there is no DPSP because DPSPs are not enforceable. I would call a touchstone for laws. If a law is passed by the parliament such that it tends to violate certain aspect of the fundamental rights, তাহলে কোন হবে কি কোর্ট জুডিশিয়ারি তাকে ডাইরেক্টলি কাট আউট করে পারিব। বাট তা মানে নুহ যদি ডিপিএসপি রে কোনসি যদি এমতি ল হলা যেটা ভায়োলেট কৰিছি তা মানে নুহ যে ড্রাস্টিকলি কোর্ট তাকু কমপ্লিটলি ব্যান কৰি দব। আউ কোন ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক এন্ড কলেক্টিভ ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস সবুবেলে নিজুকু মানে ব্যক্তিকু সি ফোকাস করে। বাট হোয়াট अबाउट द DPSPs are always collective. ता तो सोसाइटी को केमती बेटर हबो, गोटे गाँ केमती बेटर हबो, गोटे शहर किंबा गोटे देश केमती बेटर हबो, that is what is DPSP. For example, under DPSP, state has been suggested to employ village panchayat. These are certain examples which were given. Next one, suspension. Yes, hey pariyo ki nahi? हाँ hey pariyo. If fundamental rights can be suspended under Article 359, emergency situation hey pariyo. But 2021 ta hey pariyo, suspend hey pariyo. But DPSP can never be suspended even during an emergency because these are not enforceable. So এইটা আমি কোন জানলে না এই যে পোরশনটা আমি আপনাকে বুঝাইলি এই পোরশন হচ্ছে this is the difference between fundamental rights and DPSP. But এতিকি তো লিখি দেলে হবনি, ইয়াকো ইয়ে 5 মার্ক দেইছি তাকো ইয়ে 5 মার্ক দেইছি আর বাকি 5 মার্ক লিখিয়া পড়িও। কোন লিখিয়া পড়িও कि डिस्कस रेलेवेंट केसेस, हमको केस गुडा को भी मेंशन करिया पड़ो। कोन केस अछि? Look at this case. Champakam Derojan. Look at this case. First case is 1951. State of Madras versus Srimati Champakam Durayarajan. कौन केस रे बुद्धि लाइन लेके कौन लिखा है जी कि the court of law ruled that while fundamental rights are enforceable, DPSP state not enforceable. Therefore, fundamental rights will prevail over DPSP. Further, it was added DPSP would run as a subsidiary to fundamental rights. First case, 1951. Champakam Durayarajan. And try to appreciate. যদি ଆପଣ ପୁରା ଲେଖି ପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଡ୍ରାସ ଭର୍ସେସ ଶ୍ରୀମତୀ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ସିମ୍ପଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଡ୍ରାସ ଭର୍ସେସ ଚମ୍ପକମ୍ ଦୁରାରାଜନ 1951 କେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି 2008 ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ଅଶୋକା କୁମାର ଠାକୁର ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। The apex court in this case held that both fundamental rights and DPSP state policy go hand in hand. Fundamental rights deal with political and civil rights, whereas DPSP deal with social and economical rights. The court adjudged that the non-enforceability of DPSP does not make it subordinate to the fundamental rights. But एठी चंपकम दुराराजन कोन हेतला एठी कोहा हेतला कि DPSP is a subordinate to fundamental right, but एठी अशोका कुमार ठाकुर रे कोन हेछि एठी कोहा हेछि DPSPs are not subordinate to the कोन fundamental rights। आ गोटे केस कोन देखिबा मिनरल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सेठी कोन करा हेछि सेठी लिखा हेछि कि the court ruled that fundamental rights are the means to end rather than end in themselves। Look at this statement. I think eta ei jo question ei jo statement ta it was asked in essay actually। So it was decided that Article 31C would be protected only if it is made to implement the directive principle in Article 39B and C, not in any other DPSPs. Next hoda re mane punya to reintroduce aitla the Kerala Educational Bill 1958 re doctrine of harmonious constructions was propounded in the case in order to avoid conflict between the fundamental rights and directive principle। Harmonious propound mane ki diti jako misiki kimte balance rahibe। आ गोटे कोन केस अछि कि पथुमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1978 रे
The purpose of the DPSP was highlighted in this case, and it was stated that DPSP plays an important role in fixing socio-economical goals. The combination of fundamental rights and the directive principle of state policies should be maintained as has been declared in this system. Finally, what will be the conclusion? If we look, this is how you write, right? Dijon ko apna tik analysis kale, tik balance kale, then conclusion kon likhibe ki if we look both fundamental rights and DPSP, both have been extremely instrumental in the governance of the country ever since the independence of India. Both have served well in governance of the country. When we compare both of them hand in hand, directive principle of state policies falls short in comparison to the fundamental rights. Look at how beautifully we have concluded. This is called as articulation. That's it. Starting ame kale, we have understood the demand. Differences कौन आमे लिखिले प्रथमे पड़े गला सेटा हां प्रथमे आमे differences लिखिले तापरे आमे लिखिले कि कौन relevant cases लिखिले then finally conclusion. And who will cut down your mark? Just let me know. एवळे जदि आपण लिखुचंदी एमति कारण साहसी होबनी जे आपनकर मार्क काटेबे प्रॉब्लम कोन पिला एवळे लिखु ना से लैंग्वेज यूजिंग करना दे पॉलिटी रे जनरल स्पोकन इंग्लिश यूज करछन ताले कोठी हो क्लियर बुझी पाले That's it. Let me know. सर ये जो लास्ट क्वेश्चन था सर जदि आमे जेमिति नॉर्मली आमे डिफरेंस रो आंसर लिखंती माने गोटे पटे फंडामेंटल राइट्स गोटे 11 टाणी एपटे डीपीएसपी लिखि कि पॉइंट गुडा से बुलेट पॉइंट टाइप रो लिखले चलिबो कि सर हां चलिबो द डिपेंड करे ता भीतर कंटेंट कोन अछि नहीं जो आपण पॉइंट कहले सेही पॉइंट को सेही टाइप रो लिखले सर प्रेजेंटेबल देखा जीवार अछि दीपटे लिखले टिके असुविधा कोन होय कि माने टिके क्लमजी हो जाए बुझि पाल जदि आपण से बेला प्रेजेंट करि परिबे प्रॉपर्ली लिखि परिबे असुविधा नहीं ओके सर समस्त बुझि पाले आज हाउ वाज द क्लास केमति थिला आज रो डिस्कशन आपण कोन जानले कोन सिखिले आपण प्रथम रो जो माने को आई थिंक जो प्रॉब्लम थिला फर्स्ट प्रॉब्लम कोन थिला कि सर मु कंटेंट जानि छी बट मु ताको केमति कंप्रेहेंड करबी मु जानि पारनी द्वितीय जिंस कोन थिला कि सर मु कोठु स्टार्ट करबी कोठु एंड करबी मु जानि पारनी राइट एसो ही प्रॉब्लम थिला आपण आ तृतीय जिंस कोन थिला कि किछि किछि क्वेश्चन रो डिमांड मु बुझी पारनी नाउ आर यू कॉन्फिडेंट समझते Yes, sir. Yes, sir. बाकी समझते सुधांशु फाल्गुनी कानुचरण Yes. Yes, sir. बुझी पाले परिश्रम न कले हबनी अच्छा बाय द वे जस्ट गुड जिंस पछरे पे जाउची पूर्वरु जो आपण आंसर गुडा लिखिथिले माने जो माने भी मेंस देइछंती आई होप दैट आपण माने टिके कोन मिस हे जाइछ आपण निजको माने रेट्रोस्पेक्ट करि परछंती मु आशा करिवे आपण समस्त गोटू दैट मु जो जिंस गुडा कहिली आउ ताको आपण फोकस करंतु एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो माने भी एग्जाम देइछंती भलो कथा मु इवैल्यूएशन ऑलरेडी हे सारछि आई थिंक जीएस रो बाकी अछि त अल्प किसी खाता बाकी अछि आउ फीडबैक जहां भी मिलिबो ताकू ऑलरेडी मु तो डिस्कस करि देली आ जहां भी आपन को फीडबैक मिलिबो आपन सेही हिसाब रे ताकू काम कर नेक्स्ट जिंस आमे कोन करबा जे आई थिंक आपन को काली भी गुड बहुत इंपोर्टेंट क्लास कन्या जा सर को अछि से यूपीएससी टॉप फैकल्टी ज्योग्राफी नेबे जी आंसर राइटिंग रे आपन को चेष्टा करंतु तांगो नॉलेज गेन करिया पे बिकॉज़ ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर इन ज्योग्राफी कहले चले एंड सिखंतु बहुत किछि जानिबे so I'll be I think see learn from the experts that is what I mean to say haphazardly निजर समय को वेस्ट करंतु नी बहुत मूल्यवान आपनकर समय एंड पॉइंट्स गुडा टे काम करंतु इनकलकेट करंतु रिवाइज करंतु कंटेंट को आउट केमते आज जो देखिबे मॉडल आंसर रे बहुत सारा एमते पॉइंट्स मु गुडा देइछि बहुत सारा शब्द यूज करछि कीवर्ड्स गुडा यूज करछि जोडा कि जनरल बही रे आपन नॉर्मल पाइबे तो एई जो कीवर्ड्स ए सब रो जो कमांडटा ऑटोमेटिक डेवलप हुए नहीं राताराती हुए नहीं सेति खबर कागज पढ़िया पड़े पर वर्तमान तो टाइम नहीं आपन पाखे तो जो जिंस गुडा आपन को एठी मेंशन कराइ छै मॉडल आंसर मु फॉरवर्ड करथिबी कि ग्रुप आपन जो गूगल ड्राइव फोल्डर अछि सेथरे मु गोटे काम करछि सेथरे मु अपलोड कर देबी सो दैट समस्त को एक्सेस मिल जिवो
and yeah, that's it. So all the best for your next exam. Next आपनकर जो जनरल स्टडीज रो एग्जाम अछि आउ जो नेक्स्ट क्लासेस अछि अप्रिशिएट करी कि सारो गोटू बहुत किसी सिखंतु जानंतु केमती कोन लिखिबा एंड मु भाबुची बहुत ही किछि आपनको इंप्रूवमेंट हो. ऑलराइट एवरीवन.